Hello, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, sir. Good afternoon, everyone. Welcome to you all to the second day of National Virtual 5 Days Faculty Development Program. The first half of this today's session is being hosted by Government First Grade College, Bangaru Thirupathi. We are happy to have you all with us today for this session. Now I request Dr. Jay Ganesh, Associate Professor of Commerce, Government First Grade Bangaru Tirupati, to welcome and introduce the resource person of this session. Over to you, sir. Pleasant good afternoon to all of you. It's a privilege to be with you all today for the 7 days virtual FDP program. At the outset, it's a pleasure for me to welcome you all, the distinguished guest speaker, the faculty members, the department heads, esteemed colleagues, and all participants joining us from various institutions across the country. On behalf of GFGC Bangaru Tirupati and GFGC Anekal, it gives me the pleasure to welcome you all to the Faculty Development Program on Research Renaissance, Navigating Ethics, Technology, and Methodology in Contemporary Scholarship. In an era of rapid technological advancement and changing educational paradigms, continuous learning remains the cornerstone of any academic excellence. So, with this point in mind, the program is designed to provide valuable insight into today's research topic or FDP topic, research funding and grant writing, navigating ICSSR, UGC, DST opportunities. We are deeply grateful for your enthusiastic response with faculty members joining online today. Your presence reflects a shared commitment to empowering educators and advancing scholarship growth. So, I welcome each and every one of you for the today's virtual FDP program. And I also take the privilege today to introduce our eminent guest speaker, Dr. Sunaina Lashkari. To kick off with our session today, we are honored to have with us an eminent academician, a researcher, and a subject expert, Dr. Sunaina Lashkari, Assistant Professor of Commerce, Karnavati University, Ahmedabad, Gujarat. It's a pleasure for me to introduce a brief profile of our esteemed speaker. We are truly fortunate to have Dr. Sunaina Lashkari, who has the caliber sharing valuable insights with us today on the topic research funding and grant writing navigating ICSSR, UGC, DST opportunities. And therefore, I take the privilege to introduce Dr. Sunaina Lashkari ma'am for the today's virtual FDP topic. So Dr. Sunaina Lashkari is an assistant professor at Karnavati University, Ahmedabad, Gujarat. Ma'am
is very much interested in teaching areas like research methodology, organizational behavior, industrial relations, healthcare management, and so on. Ma'am is also interested in research areas like healthcare management, employee well-being and their performances, organizational behavior, industrial relations, disaster management, and the list goes on and on. It's a proud to announce you all that Madam has got the Nobel Scientist Award by the Scientific Laurel Society. And adding feather to her cap, Ma'am has authored 3 significant books on the title Hospital Administration, Women's Health, Hygiene and Well-being. And the another book Ma'am has authored upon is Challenges in Sustainable Development. And further elaborating Ma'am's profile, she is also a visiting professor and a research supervisor at Ashford University, Texas, and S. Bird University, Zambia. And Ma'am's academic credentials are she has completed postdoctorate at Indian Council of Social Research, and then Ma'am has a PhD in the field of management and has completed Master of Business Administration. And Ma'am, to her feather in the cap, has multiple certification course. So really we are proud to have you today, ma'am, on this platform. So a special welcome to Dr. Sunaina Lakshmi ma'am for the today's FDB. Before I hand over the platform to a speaker, here are the few technical guidelines for our virtual session. I request all the participants to ensure your microphones remain muted, cameras turned off during the presentation in order to see that we get the best bandwidth and minimum background noises. Please feel free to post your questions or comments or your views in the chat box at any point of the session. Definitely we will address them during a dedicated Q&A segments at the end. At the outset, I welcome once again Dr. Sunaina Lashkari ma'am. So over to you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for a beautiful introduction. I regret my camera is not working properly, but I guess that not an issue for us for learning today. Okay. So, good afternoon to all of you, the respected faculty members, distinguished guests, and esteemed participants. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the organizing team for providing me with this opportunity to interact with you all you today. I would also like to extend my heartfelt thanks to respected principal Dr. Manjula V. Satish ma'am for inviting me to be a part of this program and for considering me suitable to facilitate today's session. I truly appreciate the confidence and trust placed in me, and I feel honored to have this opportunity to share my thoughts and experience with such an academically accomplished group of faculty members. So, it is indeed a pleasure to be here with you all for our today's session on research funding and grant writing, navigating ICSSR are research is not merely an academic responsibility. It is also an opportunity to contribute to knowledge, society, policy, and institutional development. However, in order to transform a good research idea into a meaningful and impactful project, we also need to understand the research funding ecosystem and to develop the ability to communicate our ideas effectively through a well structured research proposal. So,
Is my screen visible to all? Am I? Yes, madam. Oh, okay, sir. Yes, ma'am, Yes, it madam. is Visible. visible. Okay, sir. Okay, okay. So, most of us as a faculty member come across interesting research problems in our classroom. So, through our students, through our professional experiences, and through our engagements with society. Now, we often say that this would make a very interesting research project. We often entitle and like that could be a best kind of a condition which can give us a social impact, and this type of research should be done in our academic life. And most of the time we have such an important questions like how do we take that idea forward, how to identify the right funding agency, how do we understand whether our research is fitting towards a particular call, or how do we convert our idea into a convincing proposal. And the final question is like how to develop a research that creates a meaningful academic and societal impact. So these some of the questions that we will explore together during this today's session. And I would also encourage everyone to keep one research idea in your mind throughout this session. So perhaps that idea can be that you are already working on, or on that you have been considering for some time but have not yet covered into a formal proposal, research proposals. But I guess by the end of the today's discussion, I hope and guessing that we will be able to look at that idea from a slightly different perspective, and not only as a research topic but as a potential fundable research project. So once again, I sincerely thanks Dr. Majula ma'am, the organizing team and the institution for this valuable opportunity. And with that, let us begin with the discussion of our research funding and grant writing. So now let us start with the quick interactive question. So I need to you to type in a chat box that what is the reason, what is the reason behind like what is the reason behind the that you want to search a research grant. What is the reason? What could be a potential reason of you? Anyone? Ma'am, we need grants Yeah. from the appropriate authority to cover the expenses Yeah. Okay. Anything relating else? to collecting data, Okay. accessing certain paid journals. One, ma'am. To Yes, ma'am. promote research. Yeah, definitely. Anything else? Anything else? Anyone? Okay, so now let us just start with like what is this term called as research funding? Okay, so the challenges like what we are saying here is the research idea. We read papers, we identify different problems, we conduct classroom observations, interact with students and communities, and we also want them to become it as a grant ready. So what is the first question is what is meaning of a research capital. So let us understand what do we mean by a research capital. So research capital is not something where we are just talking about the like money aspect. It is something which is beyond the money aspect. And suppose like a faculty
member receives a 10 lakh rupees of research grant. So this is a financial research capital. No doubt, one of the first framework which is called as in a research capital is called financial capital. We will get a financial benefit, when financial gains and all. So, but during that research project, the faculty members may develop a research team and also collect a valuable data sets, infrastructures, like they also tried to publish and patent something with the collaboration of another university, another individuals of the university, and finding some kind of international collaborations, or have to present something their findings in international conferences. Okay, so these all elements will become the part of researchers research capital, not only the institutional capital but also the researcher research capitals. Okay, so I'm starting with grant. Grant will produce a data will help us to produce a publication, and that publication is comes from the collaborative conditions, which gives us recognition, and these all comes into a cycle. So once you collaborate on such kind of a condition, you will get an help and got a new grant as well. Okay, so one time if you get into this kind of activity, you will get the cycle run throughout your academic career. Okay, so we can also think about this for an example, like imagine a management faculty conducting a research on an AI adaptation of small business. So the initial grant may support their field works. The results, the data sets can generate a research paper, and those publications may attract another collaborators. So the collaborators will eventually lead them to the larger interdisciplinary proposal. So it is something where we need to focus on the entire cycle, not just only the grant. Okay, now, so uh, now one has to thought that why we should write for grants for research collaboration, or why we need to do the research funding, and why I am, because I'm already exhausted, I'm already doing so much chaos, so much work in my workplaces. There is something which is called as a work life balance, which is not over here when we are in academics. Over a period of time, we have LMS, we have like student feedbacks, we have to mentor one on one, and after NEP we have a lots of work in our daily routine life. So now, why should a faculty learn to write a grant? Okay, write for a grant. So nowadays research funding is something, it is increasingly becoming an important component of academic development and teaching. It is something which remains into our central responsibilities, but research is something which strengthens our academic profile and also contributes towards our institutional development. Also, one statement is very much clear by the UGC officials, that a successful grant can not only support a researcher, it also supports our research assistants, field works, our data collection softwares, travel equipments, and disseminations. So there are multiple gaining situations which are coming from a single grant, which is which we are going to study in the further conditions. Okay, now, so here I try to collab most of the type of funding agencies in Indian research scenarios. And now let us talk about the Indian research funding ecosystems. There is no single agency that fund every type of research.
Okay, we have different agencies which have different mandates. So for social sciences, we have ICSSR. Okay, so for social sciences, we have ICSSR who supports, and for sciences and engineering, we have interdisciplinary research like ANRF, we have DST, we have like for medical and public health, we have ICMR and DBT, and also for biotechnological research, we have DBT. Okay, so now if we are thinking of the funding agency as a different departments, like for example, if we are thinking of a funding agency like it could be a library, it could be a large library, and you would not go to the, like, simply you would not go to a history section to find a biotechnological protocol. Similarly, we should not send every research proposal to the same funding agency. Are the funding agency which is not relevant to our kind of a conditions. Okay, so the important questions is therefore not simply which grants are available. The better question is which grant is appropriate for my research problem. Okay, so, for example, if I am studying the mental well being of a university students, so the agency might potentially be relevant as like ICSSR or the DST. We are having a science and technology kind of a capacity building innovation missions. Okay, so now let us begin with the like systems of like first of all we should skip the systems. First we have to focus on the different granting agency. Like the first one is the ICSSR, and it is something like which is particularly relevant to many faculty members in management, economics, psychology, sociology, education, and related disciplines. So, ICSR is something which supports various forms of research like academic activity, research projects, fellowship, publication related supports, seminars, international collaborations, which, like, it depends upon their calls and schemes available. Like there are throughout the year you get multiple opportunities over there, and they simply consider, like, if we are saying that how to target an ICSSR funding, there is a something which is important for all of us and which we should take into our mindsets. Like that's one should consider the like the research which have their social impacts. Like for example, if we are considering a topic like impact of digital financial literacy on a womanship, yeah, woman entrepreneurship in rural Gujarat. Okay, so maybe if, like, we can see it is a simple title which, but it is an interesting topic as well. So but for a funding process, we are, for a funding purpose, we need to make it sound like a problem which is more significant, which is more having a social impact. Okay, so we need to transform our idea into some kind of a condition which it looks like a proposal topic, which looks like a condition where which is having a social impact. Okay, so if I want to study a digital financial inclusion or a digital financial literacy, I need to propose a topic uh, like evaluating digital financial inclusion and social economic mobility among rural women entrepreneurs in Western India. It showing the bigger and broader picture of your proposal topics. So proposal topic should be like something which having their senses, their conditions, which is having the variables, populations, the geographical
context, the potential policies, the relevance of the conditions. So here in the proposal topic, you can see that evaluating the digital financial inclusion and the social economic mobility among the rural entrepreneurs, like women entrepreneurs. It is very much clear crystal conditions where the first intense, like the first condition of your like funding situation can like the picking up conditions of the ICSSR individual is going to be happy. Okay, now, okay, so now we are moving towards the uh, okay, so now we are moving towards the DST department. So it is a department of science and technology. It supports the wide range of scientific technology and innovation and international collaborative programs. So DST is generally called for schemes specifically through faculty members should monitor the official call for proposals. Like there have specific schemes like they have fees and infrastructure. They promotes infrastructure of higher education institutions. They have that like supra, which is having a higher reward for research proposals. And they have like, if you have any student with you who is having into generative AI or a deep technology, some of the kind of students we nowadays students are working on like something like market trends analysis, and they are building some kind of a conditions which is having a predictions about the market trends. Are the AI conditions, are the women scientists, they also encourage women scientists. Like if you have like STEM field conditions, so they also encourage that kind of a conditions. So if you have a domain like engineering, agriculture, physics, any scientific like any sciences domains, you can apply for this kind of schemes, this kind of funding schemes. Okay, now, UGC, so University Grant Commission, particularly giving a direct and relevant like fundings to faculty members in universities and higher education institutions. And it is a corner where we have listed schemes including DS Kothari Fellowship. It is a prestigious postdoctoral fellowship coming into like 2024. And after that, and this is something which is which is having an eligibility of newly recruited assistant professor only, and a research grant for a eligible in service faculties both. So you don't have to worry about like what if you have some grants that you can get that fundings into your account or not. This is something which is for the promotion of newly recruited assistant professor and the in service for faculty members. You will get both the grants and your service amounts, and like whatever the salary amount you are receiving, both the amounts are eligible for taking this kind of a grant. Okay, so now the exact eligibility condition should always be checked against the current notification. But still, there is an important like points that faculty members should never rely on old PDFs or your colleagues experience. That some of my colleague has already already submitted their proposal, but they got rejected or anything else. The don't prejudice yourself. Don't get into that kind of conditions. Just don't focus on your colleagues previous experiences or the WhatsApp messages when determining about the eligibility criteria. So the current notification are the current PDFs which are given by the UGC research opportunity. That's only the final reference which you have to consider for your eligibility criteria. So
instead of like waiting for 5 years to establish a research profile, the faculty members should immediately explore their eligibility, early career, or a newly recruited faculty opportunity through UGC research opportunities and the mid-career conditions, the travel assistance and seminars. They give all kind of fundings to you. Okay. Now, there are many other funding bodies like ICMR, which is which helps us in health, epidemiological, clinical research, and health system research, and it is highly relevant with that kind of a conditions. We also have DBT, which helps we already discussed about that, like which helps biotechnology, genome conditions, life sciences. Like we have CSIR and ICHR, which supports historical research and psychological, like philosophical research and related interdisciplinary research. Okay, so now let's just target about the what kind of how we can get a future grant acquisition, how to how to apply, how to get an application got selected, how to get that kind of conditions, and how to draft a proposal for that. Okay, so imagine if we are developing an title like digital transformation and employability of a management grads. Okay, so uh, let me ask you all, like where would you apply that kind of conditions? If I am having a question like digital transformation and employability of management graduates, so how and where would we apply for that? Okay. This is a research question which we can say. Where would we apply? Anyone? We can apply in DST, ma'am, Department Yes. of Science and Technology. Okay. Anything else? Anyone else? Digital transformation and employability of management grads. ICSSR. Okay. ICSSR also. Okay, ma'am. Okay. But I can say that there is no automatic answers, and we have to first match the exact research question. Okay. So if we are emphasizing on a social and educational outcomes, so one agency may be appropriate. Like if we are talking about the digital transformation and employability, so we can say like maybe possible a DST is something which is appropriate for digital transformation. But if we are involving like the other phase of conditions, if we are saying that emphasizing in on social and educational outcomes, like project involves like development of technology intervention, another agency also become a relevant conditions. Like, yeah, can we get? Yes, definitely, sir, definitely. So now so first of all we have to see that we have a multiple kind of funding agencies, right? So first we have to acknowledge three important questions. The question is, am I eligible? The first question is, am I eligible for uh, for applying that kind of a grant? And second one is the, does my research theme will fit to that condition? Research fit to the theme that is asking by the funding agencies. And the last one, can I demonstrate,
can I demonstrate my expected outcomes? Okay, so this is how we can say, like, if we are seeing here, now see, so general application procedure are before applying for a grant, one has to answer their own question, like first, whether I am eligible or not, does my research fit to the theme, and can I demonstrate the expected outcomes? And if any of the answer is no, or clearly no, so the submitting the proposal may not be the best use of your time. Okay, so before writing a proposal, we must learn to read the funding notification properly. We need to read what they are asking for, what they want from us. Okay, so the call tell us that what is the agency wants, who can apply, what activities can be funded, what documents are required, and how the proposal will be evaluated. So, suppose a call is specifically asking for interdisciplinary research addressing a climate resilience. So, if we submit a general study on employee satisfaction, whether it may be a perfectly good research or not, but it is not aligned with that particular call. So, therefore, before investing weeks in writing and proposing some kind of a proposal, we need to write a one page of call feed sheet. Okay, there is one thing which is called as a call fit sheet, and call fit sheet is something where you have to write the theme, eligibility, objectives, budget, duration, outputs of the like proposed outcomes, and the deadlines. What should be the deadlines? What are the like different deadlines which you have gather for the entire procedures? Okay, so this is a very simple exercise and which can prevent us by from spending our significant time preparing a proposal that does not fit for the call. Okay, and here you can see the grant cycle is not only focusing on like that publication, but also the target agency selection as well. Okay, now, so here we can see the annual grant calendar. DST and DBT calls are from January to March, and the UGC faculty schemes are coming up into April and June, which we know this is the time for us, like for result preparation and all, and we are for like for the next semester preparations. And international bilateral calls like ICHR, ICPR announcements are in between July and September. Also, CSR grants are there, AICT schemes are there, travel grants are there, which are like most probably these kind of time quarters are like October and December. They review and like this is something where we have to submit a very refined and proper applications for our travel grants, CSR grants, and industry CSR grants if we are looking into that kind of conditions. Now, so now we came to the heart of our today's session, like what how to write a grant. Okay, so first of all, writing a grant proposal or a research proposal should tell a coherent story. One should write a problem, gap, question, method, outcome, output, or impact. Okay, so first, what is the problem? So, not merely what topic are we interested in, but what problems requires to investigate is the first and the foremost important element of our research like
research like proposal. And this is the entire game, this is the first and the entire conditions where that these funding agencies will pick you up or rejecting your kind of like whatever the topic, the title is the first criteria where you are uh, where your entire research grant is like dependent on. Okay, second, what do we not know? Okay, so a literature review. So if we are talking about a literature review, it should not become a list of authors, it should not become a list of papers, it should help us to demonstrate the gap. Okay, now the third is exactly what will be the study accomplish. So the objective should be specific enough that the reviewer can later determine whether they have been achieved or not. Next is the methodological part, where we are saying that the that how will we answers the research question. Okay, so research question, and this includes your research design, sampling, instruments, data collection and analysis, ethical consideration, and the last foremost conditions at what will the project produce. A good proposal distinguish between activities and outcomes. Whatever you are doing is an activity, but what these agencies are wanting is the outcome, what you are going to produce, why we are investing in you. Okay, so this is the entire questions which we have to target, and the impact. So why should the funding agency invest in this kind of research? What will change because of this project? Okay, so let us now convert an ordinary research idea into a potential fundable proposal. So, taking an example of women and digital financial literacy. So I guess it is very broad topic where we are like taking women's as well as their digital financial literacy. What are the criteria, what are the aspects, what are the variables? So and how we improve that conditions, which like we are entering into 80th independence year, and still we are having uh, uh, scroaching like question which telling us like why we are telling you like still we have this kind of a question like to improve that women's and their digital financial literacy, their financial independent conditions. Okay, so financial literacy and e-ship conditions are the decision making conditions into the rural Indian women's, are the females are supposed to be like we have a population, we have context, we have different conditions. And for improving further, the research could examine whether the digital financial literacy influence financial decision making, access to digital financial services, e-ship confidences. So this is what I am saying, that why should an agency invest in your like research proposal? Why? Because that proposal is not only having a simple investigation, it is also supporting further into digital financial services, e-ship confidence building, financial decision making. Even it is also connected with the SDG goals, like the 17 SDG goals, which helps which also helps in like developing a new type of infrastructure for females, for the individuals who are dependent, who are coming from the rural background, who are new to the e-ship and the other conditions. Okay, so
First, we need to match the scheme, then we need to create a concept note. Okay, and concept note has like, I'm already telling you about that. Like, it is having the theme, like and the eligibility, objectives, budget, duration of your project, like outcomes, then deadlines. These all are coming into conceptual notes. Now also we need to endorse it by our head of institution. The approval is mandatory in every, like if it is also, we know that it is a financial orders, financial conditions, so we need to obtain approval from our institutional head. And the submission conditions are like, we need to reframe the structure, like in a way, in such a manner that it gives some kind of a condition. It generates a peer reviewed publications. It also creates some kind of literacy framework. It also recommend a capacity building kind of a conditions for the entire like population, whatever be the research population is. Okay, so we need to simply make the title more complicated, and we need to convert a broad interest into a structured research problem. So this is the essence of your grant writing, the proposal writing of your grant, whatever the, like whatever research grant you are targeting on. Now, okay, now let us discuss about an area where we are talking about like uh, budget writing. Okay, so how to finalize our budget, or how to define a budget for a upcoming grant, and how to identify what should be the resource allocation is, how we are like how we segregate our conditions with the infrastructure development, institutional developments, our entire team for research, and the publication charges, whatever be the conditions is. So now so budget is actually a part of the research argument. So if I propose a national survey involving multiple states, but allocate a very small amount for field work, the reviewer may reasonably question the feasibility of my research work. So, if the project requires an field investigation, we should explain why they are required. Okay, so every time we should answer the why question. Why is the problem important? Why, who are the beneficiary? Why now? What are the generally new conditions, are the concepts which we are going to talking about? And how and why this kind of budgets, other data collection methodology, other methodology which we are proposing is important for our like research agencies to grant us like research like funding. Okay, so similarly, if we are talking about, if we are proposing something like about the softwares, about the equipments, about the data acquisitions, disseminations, and the different expenses should be connected with our methodology. So now, if we are talking about the winning budget and winning proposals, we should avoid overestimation. We should justify every rupees, every penny counts. Okay, so we should justify every rupees. We have to link our entire budget head directly to the specific objectives, and we need to adhere towards the norms like the agency specific pay scales, the travel allowances, whatever it is allowed. We should like strictly
strictly adhere to that kind of a norms. We should not go here and there and like to avoid to do our own kind of a conditions. Okay, now the red marks on entire rejection conditions, this is the important element for we already seen like ICSSR is producing a lot of requirements are the research grants and fundings, but the rejection rates is also very high. uh, at the time of my research proposal, they have 1500 proposals in a similar parallel way, and they select only merely 40 individuals who have who demonstrate their potential conditions, who demonstrate some kind of a social impact, who demonstrate many of the situations towards my research is entirely about the tribal Bhil women's, their health, hygiene and well-being. I have rated that kind of a condition. So I know I have witnessed that kind of interviews and that entire procedure. And last 2 3 years I have I'm blessed to be a part of that kind of entire team. So I can tell you that uh, the key rejection factors of our entire conditions is first, sufficiently, but like maybe we design a problem in a sufficient way but not significant way. Or we design a research gap, or we identify a research gap, but it is not clearly established. Our methodology is quite a weak kind of a condition, like vague research design, unclear sample size calculation, or missing statistical validation. It is the first red flag of your entire proposal, which make the individuals of the authorities to reject you in the first hand conditions and the first intents only. So sometimes that proposal is good but submitted to a wrong agency, it is also a condition where you get rejection. Sometimes the budget does not correspond to the methodology. Also, sometimes outcomes are too vague. Like if you are promising an agency that you will help them into bringing something very drastic change, so that is something which is vague. We all know research is something which is a one step ahead, nothing more than that. So we should consider that in our mind, that we are not going to make a very broad drastic changes, but we are going to make are filling the gaps between the conditions. So don't make your expected outcomes are as too vague. Also, uh, if we are if we have our budget and unrealistic timelines, unachievable timelines, like we are saying that we will do an entire national survey in 6 months or 2 months, or if you are saying that you will build the uh, entire application software, or something like DST production and the biotechnological research in merely in 1 year. So this is a vague and unrealistic timeline. So these four conditions, like failing to cite recent publications, is also it also makes literature review in a weaker kind of condition. Hello, hello.
Okay. So now, so now, before, I know it is a red flag, but still, we have to think like a reviewer rather than a proposal creator. Okay, so change your perspective. Change your perspective for next few minutes and do not think like a researcher. Think like a reviewer. So if you received a proposal, who like f- for example, if you get a proposal having the entire game, like which having an example, for example, like you have an proposal on digital well-being among undergraduate students. Okay, if you receive proposal, and would you immediately understand the problem, like digital well-being among undergraduate students, are improving digital well-being among undergraduate students, would you immediately understand the problem? Is there a problem? Or would you believe that the researcher can actually complete a project, like if I'm saying a wider spectrum, like digital well-being, are improving digital well-being among undergraduate students? Who are these students? Like where are they come from? What is the definition of undergraduate students? Where are they are? Okay, so would the expected outcomes justify the proposed investments? Like, yeah, or it is suggesting remembering like 5 C's we should, if we are considering a winning like winning proposal or a strategical writing of a proposal, we should concise, we should stick to a rule of 5 C's, which is clear, concise, credible, coherent, and compelling. Okay, so do you find improving digital well-being among undergraduate as a title is something which is clear, concise, credible, or coherent, compelling? Anyone? Okay, so no, it is not. Actually, it is not clear, not a concise kind of a condition, not a concise kind of a like title. It is only like a vague or a broader spectrum where you can't find anything, any ends and means. There is no conditions. Like, but if we are supposed to make a grand proposal, we should think about, like, we always treating grant writing as an emergency activities. We see a call and become excited and attempt to prepare everything within 2 weeks. A more sustainable approach is required to create an annual research funding calendar. So, audit your CV, your publication, your research experience, your previous projects, identify research problems, conduct your research literature review, develop methodology, identify collaborators, prepare the proposals, undertakes internal reviews. Like, you have to fill if you want to do a research proposal, if you want to create a research proposal, you should at least take a 12 months of scenario for that. So once you set your thought process about a funding strategy, you should take it as a 12-month strategy. Like, in your first 2 3 months, you need to audit all your publication, your experiences, your previous projects, your eligibility criteria regarding all entire agencies which are going to support your research proposals. Then in
April and June, you should identify your research problems, the theme of the upcoming research grants, and the funding conditions, and you should conduct your literature review at that time. Now, in July and September, develop a methodology, identify collaborators, prepare the entire proposals. October, December, you should undertake an internal reviews, finalize the budgets, actively monitor relevant calls, and plan your entire calendar, not just fix your deadline calendar. All what we all are doing is we just seen a call, and within 2 weeks we want to draw our proposal, draw our entire conditions, and submit it. And that's not some kind of conditions which are going to accept by the authority, by the ecosystem, are the individual authorities, are the centers, uh, actually. Now, the last and the I'm into my last 2 3 slides, and I want you to conclude your thinking beyond one grant. uh, we have to, like, you have to see that the objective, it should be to develop an entire sustainable research ecosystem. You need to first begin with the focused research problem, develop a small project, and publish a credible research team. Build your national collaboration, apply for larger grants, develop international partnership, interdisciplinary projects, and eventually the faculty members can contribute to build a research center, laboratory, research groups, and institutional research programs. Therefore, the grant should not be viewed as the destination. The grant is a vehicle that enables research. Okay, so now see, here it is a case study of social science, like social sciences, where the madam is having a major research project, and she is not only like she built their she support that employee well-being and Indian healthcare integration, with AI integration on employee well-being in Indian healthcare scenario. She targets about like 2 Scoopers index journals, 1 National Health Ministry policy briefs, 1 PhD scholars capacity supported, because the amount is very high. They have 24 months, 2 years of project duration, and they focus on the entire journey of that kind of conditions. Okay, so uh, if there is one message I would like you to take away from today's session, it is: do not chase funding opportunity randomly, but to build a research program that is entirely aligned with a genuine problem, a clear research gap, and an appropriate methodology. Okay, and a meaningful expected impacts. Now, funding agencies are not simply looking for proposals that ask for money. They are looking for credible research that can create knowledge, solve problems, strengthen capacity, and contribute to social policies and societies. I would also encourage everyone to adopt a simple monthly practice, like identifying one relevant funding call, read one funded project as successful proposal where available, develop one component of your own proposal, and discuss one research idea with your potential collaborators. Over a time, these small activities will create what we have called today is research capital. So, also, I want you to frame, like, what is your research idea which is having a funding fit. Okay, so
any one of you, if you have a research idea or a research problem which you want to address here? Anyone? Okay, so let us try one activity. Like, try to frame a one liner answer of what is your research problem. Else you can try, like, I can write the questions which you can identify and ask and discuss your idea with the person sitting next to you for 2 minutes. Maybe your colleague should answer one question like, why should a funding agency invest in this kind of research? Okay, so it is a simple exercise which demonstrate your important principles. If we cannot explain the value of our research to our colleague in a few sentences, the proposal we like may need further refinements. Okay, so what we should do is, you need to write your research problem. Sorry. Then your target population, uh, research gap, potential funding agencies. And expected outcomes. You need to write it up with your friends, and like you can discuss it with your friends. Okay, and last, I also want to highlight these three international opportunity, which is entirely for our faculty members. Like, there is one thing which is called as a Fulbright Nehru Scholarship. It is an US and Indian educational foundational grant where the faculty members can get postdoctoral fellowship as well as academic mobility. We can represent India into like US for, there are a number of lists, like for social exchange programs, for and like Fulbright emeritus scholarly programs. You can go over there and like work with the US infrastructure, HBRs, and other good infrastructures. There is one more thing which is coming from the German institutions. It is Humboldt scholarship or fellowship. It is also given to the experienced faculty members from the German research fellowship, and it is into the science and STEM kind of research. There is one more Maria Curie programs, which is an European Commission grant supporting mobility and collaborative research. So there are a number of joint and global fellowship. You can also, the if the faculty members are coming from the science backgrounds, there are a number of fellowship which we are getting. Like, if also I'm personally emphasizing on the interdisciplinary research kind of conditions, are across cultural, academic,
conditions where you get the global facilities like networkings, the access towards like their international publications. We can also go for the faculty exchange programs and all. So these three international opportunities will help you through that kind of conditions. Okay. Also, not only that, like your research capital will help your digital profile, your collaborative networking, your industrial links, which can also helps you into finding a CSR grants, and the persistence. Like every time you get a rejection, you will get like feedbacks, and next time you got a winning situation. And this is the entire like cycle of the research funding and guides. Okay. So there are n number of essential like research portals. I have already shared this PPT with Manjula ma'am, so she will tell you, she will give you this PPT. And there are major Indian portals I have putting over here, and the other grants like NIH grants, Welcome Trust, they supports the travel and other conditions. And then research professionals like Pivot RV, and it is a procures but data sets global grant portals, which helps you through different conditions and scenarios. And we already discussed about the key takeaways, but I want to quote that every successful research grants begins with a well-defined problem and compelling idea, and a proposal that convinces reviewers of its impacts. Like whatever the outcome, it should be a realistic outcomes, not a vague one. And this is how we should target our uh, like authorities and agencies to provide us grants and all. Okay, any question? Any question? Any questions? You can put it in the chat box. Thank you, ma'am. Thank you. Hope there is no questions, ma'am. Okay, sir. So now I request Dr. Nagamani Kane, Associate Professor of Commerce, Government First Grade College, Bangaru Thirupathi, to propose vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Respected dignitaries, distinguished resource person, principals, faculty members, coordinators, and dear participants. It's my privilege to propose the vote of thanks on this occasion of the national level 5-day virtual faculty development program jointly organized by GFGC Anekal and GFGC Bangaru Thirupathi. At the outset, I express my sincere gratitude to Dr. Sunaina Lashkari, Associate Professor of Management, Ahmedabad, for being with us, the resource person, and for delivering
and highly informative session on research funding and grant writing, navigating ICSSR, UGC, DST opportunities. Ma'am, your valuable insights into identifying appropriate funding opportunities, understanding funding agencies, preparing competitive research proposals, and navigating the grant application process have provided our participants with practical knowledge and motivate to pursue quality research and funded projects. We are truly grateful for your time, expertise, and generous sharing of your experience. I take this opportunity to express our heartfelt thanks to the principal and faculty members of GFGC Anekal for their valuable cooperation and collaboration in organizing this national level FDP. And my sincere appreciation also goes to the principal, faculty members, and technical team of GFGC Bangaru Thirupathi. I would also like to place on record our special thanks to all the faculty members and participants from different institutions across the country. Finally, I extend my sincere thanks to everyone who contributed directly and indirectly to the smooth and successful organization of this national level FDP. With these words, I conclude with the vote of thanks and once again, I express my heartfelt thanks to the Dr. Sunaina Madam for the wonderful session. Thank you, Madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you to the entire organizing team. Once again, thank you, ma'am, for such an informative session. Now I request Government First Grade College, Anekal, to host and take over the next session. Thank you. The second session will be starting exactly at 3. Thank you for your patience.
Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the second session of today's FDP on Research Survival Kit, essential tools every researcher should carry. It is my pleasure to introduce our esteemed resource person, Dr. Rajesh Rangappa Aldarthi, Assistant Professor in the Department of Library and Information Science at Assam University, Silchar. Dr. Rajesh has an impressive academic background in the field of library and information science. He has completed his bachelor's from BRB College, Raichur, followed by a master from Gulbarga University, Karnataka. He is also UGC NET qualified and holds a PhD in Library and Information Science from Assam University, Silchar. He has 60 plus MLSIC dissertations supervised to completion and 4 PhD research scholars under his supervision. With his academic expertise and experience in library and information science, Dr. Aldarthi brings valuable insights into the tools, resources, and strategies that can support researchers throughout their research journey. Today's topic, Research Survival Kit, essential tools every researcher should carry, is highly relevant in an era where researchers have access to an ever-growing range of digital tools and scholarly resources. We look forward to learning from Dr. Aldarthi about the essential tools that can make research more systematic, efficient, and effective. On behalf of everyone present, I extend a very warm welcome to Dr. Rajesh Rangappa Aldarthi and thank him for joining us today. Sir, we are delighted to have you with us. The session is now yours. Thank you very much. And thanks to this organizing committee for providing me this opportunity. Let me try to switch on my camera if possible. Am I visible? And Yes, sir. Yes, let sir. me Go. share my Visible, sir. presentation. Yeah, thank you very much for the confirmation. Is my presentation visible? Yes, sir. Yeah, thank you very much for the confirmation again. So, dear participants, this is a very good opportunity to have discussion with the people from South India, basically. Now, I'm currently working in Assam here since last 10 years or so. So, I'm working as assistant professor in the Department of Library and Information Science, Assam University, Silchar. Uh, just a second. Mm, I'm in a meeting, okay? But sorry for the interruption. Actually, I had one guest here. Okay. So, I'd like to thank Government First Grade College, Anekal, the principal, and one of my friend, faculty member, Netravati there. She's been she has approached me to deliver this lecture today, and I'm very happy and to share my insights on this paper on this topic of research survival kit. I wish the best of luck for this 5 day virtual faculty development program. They have completed already 1 day, and this is second day, and I think this is the last session. Maybe all of you might have had your lunch already. Can you confirm? Yes, sir. Yeah. So feeling sleepy now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. So I can understand that. Let us try to keep this session very interactive, and if possible, if time permits, I'll keep this as a lecture come demo session. Okay. So we'll be discussing the tools and the kits that is the researcher has to have, and along with that, we'll try to see the demonstration of that. Maybe 1 or 2 minute demonstration because we cannot take much long here because each tool itself is a topic here. So I'm going to give you the recent updates on these tools and how these tools can be used and why they have to be used for a researcher, why it is important. Okay. So these things we are going to discuss here. So you will have a wonderful understanding. And let me start by saying that, okay, I'll be little bit bilingual in my session, Hindi along with English. Okay. Is that fine? Okay, sir. Yeah. Thank you very much for the confirmation. Now, let us imagine.
when a mountaineer, okay, the person जो mountain climb करने के लिए जाते हैं, suppose आप मान के चलिए अपने आप को एक mountaineer है, you are a mountaineer, okay, and before starting the climb, what you will do? Can you tell me? Will you discuss the philosophy of mountain climbing, or will you just check the kit that is required for the climbing? Come on, participants. I want this session to be interactive. Please be interactive. Should I switch off my camera so that bandwidth will be a little bit problem for me? I'm not getting response. Hello. Am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Thank you very much. See, so as a mountaineer, he will discuss this philosophy of mountain climbing maybe at no very early stage. But when you are about to climb a mountain, you need to check your survival kit. You need to check the kit, the ropes, harness, anchors, first aid, map, way to call for the helpline if something goes wrong. Okay. So all this kit portion is what we are going to learn today. We are not going to discuss the methodology, research methodology, which has been taught to us. So पहले क्या होता है कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी टीच करते हैं और छोड़ देते हैं, है ना? They leave you alone. Now you will have that painful experience, painful no journey of doing the research on your own alone, right? So क्या होता है? आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं। फिर आपको पता नहीं है कि आपको कैसे रिव्यू करना है, कैसे चीजें। आप फिलोसॉफिकली यू नो द थिंग्स, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली, एंड व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल टू परफॉर्म these tasks with more accuracy, with more perfection, or you can say more no time saving way. Okay, so that's where these kits will come into act. Okay, so this session is the kit check session, I call it as. So एक यहाँ पे I just want to make a statement that everything in this kit, ये जो किट्स जो 11 टूल्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे किट्स का जो either they are free or somebody has already paid on your behalf. आपके बदले में कोई दूसरा उसके लिए पे कर चुका है, ठीक है? Suppose your institution, your college, your university might have already paid for the subscription of those tools. So ऐसे 11 टूल्स का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है? Now, अभी recent changes में we have noticed that the government of India, the central sector scheme approved by the Union Cabinet on 25th November 2024 and operational since 1st January 2025. The ONOS, that is One Nation, One Subscription, was launched. ठीक है? From 1st January 2005 से लेके अभी तक it is active. What it carries, it provides access to roughly 13,000 e-journals from 30 international publishers, including the Elsewhere, Springer Nature, Taylor and Francis, Wiley, टू अराउंड कितने लोगों को दे रहे हैं ये सब इंटरनेशनल पब्लिशर्स का एक्सेस किसको दे रहे हैं 6,300 टू 6,500 गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट R&D इंस्टीट्यूशंस को दे आर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू दिस 13,000 ई जर्नल्स फ्रॉम 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स इस स्कीम के अंडर में। इससे पहले वाला जो कंसोर्शियम मॉडल था वो है आपका ई शोध सिंधु। Ishod Sindhu. Along with that, the colleges had the enlist and the technological institutions had the hindest. उससे पहले ईशोध सिंधु को भी हम लोग यूजीसी इन्फोनेट भी बोलते थे. So there were a lot of subscription modules. Okay. Now, what is happening with this subscription? इसमें ये ONOS में और एक आपको
अब अपडेट में दूं तो ये इट इज गोइंग टू बी estimated to be benefiting around 1.8 crore students, faculties and researchers. ये estimation है और this is for the 3 years 2025, 26 and 27. 3 years के लिए government 6,000 crores it is spending for the subscription of this ONOS resources. Okay, consortium basically. Along with this 150 crore का आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर पब्लिशिंग इन सेलेक्टेड ओपन एक्सेस जर्नल्स भी ये सपोर्ट भी एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट 6,000 करोड़ प्लस 150 करोड़ फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस और इसका कर्ता मतलब जो ऑपरेशनलाइज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है इनफ्लिप नेट सेंटर विच इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। तो इसका एक्सेस कहां से मिलेगा आपको? एक्सेस आपको मिलेगा कैंपस आईपी से और एक एप्लीकेशन है इनफीड लॉगिन क्रेडेंशियल्स बोल के, ठीक है, उससे आपको मिलेगा। ये कहां से मिलेगा? आप अपना कॉलेज का लाइब्रेरियन से, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन से आप बात कीजिए और उनको पूछिए कि हमको ओएनओएस का एक्सेस है क्या। डेफिनेटली यू माइट हैव, ठीक है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर इज दैट यू ऑलमोस्ट सर्टेनली हैव मोर एक्सेस देन यू थिंक। आपको शायद हो सकता है किसी को पता है किसी को नहीं पता है। आई नो दैट द audience is very learned here, but still if somebody doesn't know that how to access the ONOS subscription, then please ask your librarian either to कैंपस के अंदर में आप आईपी एड्रेस से लॉग इन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कैंपस के बाहर अगर आप है तो आपको इन फीड के थ्रू लॉग इन रिमोट कंट्रोल एक्सेस के थ्रू आप ओएनओएस का एक्सेस कर सकते हैं। तो both the colleges organizing this FDP are government first grade colleges, right? So that means the journals you have been requesting from your friends। हम लोग जनरली करते हैं ना कि कोई जर्नल हमको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ये जर्नल का आर्टिकल फुल टेक्स्ट भेज दे भाई, ठीक है, प्लीज सेंड मी दिस आर्टिकल। in all probability in all probability we might not know that no we already have access to these journals or that article, but instead we follow the shortest method of asking or requesting our friends. So I would suggest that you please ask your librarian for your in-feed credentials this week, okay? So with that, ONOS पेज 1 covers journal content from 30 publishers। पेज 1 का जो है वो 30 publishers से content आता है। It is not same as the subscription to the indexing and citation databases। तो यहाँ पे आपको ONOS सब्सक्रिप्शन और इंडेक्सिंग और साइटेशन डाटाबेस को अलग करना पड़ेगा। तो बेसिकली इंडेक्सिंग और साइटेशन डाटाबेसेस में आपके 4 आते हैं, पर पहले 3 जो है पॉपुलर हैं, सबको पता ही होगा। फर्स्ट वन इज द स्कूपर्स। स्कूपर्स इंडेक्स हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, स्कूपर्स इंडेक्स्ड जर्नल्स बोल के डिस्कस करते हैं। Q1 में, Q1 में किया, Q2 में किया, Q3 में किया, Q4 में किया। तो इसमें भी स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। तो हाईली रेटेड Q1 में आते हैं, नो उससे थोड़ा कम Q2, Q3 एंड Q4 में आते हैं, ठीक है। तो देन यू हैव द वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस इज पार्ट ऑफ वेब ऑफ नॉलेज, जो उसका पार्ट है। तो आप उसमें वेब ऑफ साइंस इंडेक्स, SCI इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, वेब ऑफ साइंस साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। ये भी बहुत ही पॉपुलर और कॉस्टली सब्सक्रिप्शन है, जिसमें भी आप साइटेशन एनालिसिस या साइटेशन काउंट्स या ट्रेसिंग, कैसे एक आर्टिकल दूसरा आर्टिकल को ट्रेस कर रहा है, उनके बीच में क्या लिंकअप है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। द अदर वन इज गूगल स्कॉलर। इसमें भी आपको साइटेशंस देखने को मिलेगा, H इंडेक्स, IQ, I10 इंडेक्स वगैरह देखने को मिलेगा आपको प्रोफाइल के हिसाब से और दूसरा आर्टिकल्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दिस you have one more tool which is launched in 2025, that is OpenLX, ठीक है, दैट इज OpenLX। तो ये OpenLX क्या करता है कि जिसको ये सब्सक्रिप्शन, जो साइटेशन डाटाबेस जो मैंने अभी बताया है, वो स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस जिसको एक्सेस नहीं है, उन लोगों के लिए ये OpenLX जो है, इट विल कम इन हैंडी फॉर देम, ठीक है।
सो आप ONOS का onOS.gov.in वेबसाइट पे जाइए और आपका वहां पे कॉलेज का एलिजिबिलिटी आप चेक कीजिए कि वेदर यू हैव एक्सेस और नॉट हैव एक्सेस, व्हाट इज योर इंस्टीट्यूशंस करंट स्टेटस। अगर नहीं है तो आप ओपन एलेक्स का इस्तेमाल करके आपका सारा बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन मैपिंग एंड बिब्लियोग्राफिकल मैपिंग आप कर सकते हैं। द सेकेंड हुक इज यूजीसी केयर लिस्ट जो है वो आपको ग्राउंड कर दिया गया है, मतलब उसके नीचे का बेसमेंट हटा दिया गया है। नाउ यू डोंट दिस यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। पहले हुआ करता था 6 महीने पहले, लास्ट लास्ट ईयर तक हम लोग फिर 16 जुलाई 25 तक वो एग्जिस्ट करते थे। तो अभी केयर लिस्ट हटा दिया। नाउ व्हेन केयर लिस्ट वाज प्रेजेंट, व्हाट वाज द प्रायोरिटी ऑफ ए रिसर्चर, that you don't have to search, find, and decide on which journal you want to publish. There is a list of journals already given by the body, UGC, and you need to select the appropriate one only out of that. जब ये केयर लिस्ट वहां से हट गया फ्रॉम लास्ट 16 जुलाई 2025 से, with there was a public notice, right? UGC 584th meeting 3rd October 2024 को हुआ, announced that the public notice dated 11th February 2025 and formalized through further public notice on 16 July 2025. इसमें बोला गया, it suggested that a suggestive parameters for choosing peer-reviewed journals by faculty members, students, and higher education institutions. If a reference list of journals as recorded in February 2025 remain available for archival purpose only. There is no longer an active maintained central list. तो ये बोला गया कि कोई भी एक्टिवली मेंटेन्ड सेंट्रल लिस्ट नहीं है और आप पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। ये क्यों डिसकंटिन्यू किया? इट इज ए लॉन्ग जर्नी, यू कैन से दैट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। नो स्टैटिकली कुड नॉट स्टैटिक लिस्ट जो प्रोवाइड किया गया था, इट नॉट कीप पेस विद द फास्ट मूविंग पब्लिशिंग लैंडस्केप, राइट? And it was very slow to recognize a very good new journals and slow to remove the old bad ones. It invited gaming, and a single national list could not accommodate genuine disciplinary diversity. They can give a lot of reasons for why it was discontinued. So actually what it means for you and me, ये जर्नल केयर लिस्ट हटाने से आपको और मेरे को क्या हुआ? तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि कुछ जर्नल्स अभी भी now also they are doing this advertising as a UGC care list approved journal, right? So they are showing you the historical data or the fabricated legitimacy. So some even the charge money for it. But आपसे मेरा request है कि please do not pay for these journals. Journals still advertising this UGC care approved as a trading on the status that no longer exists. And the next thing that matters to us is that the burden of judgment, जो जर्नल को सेलेक्ट करने का जो जजमेंट है, that has moved on to the author or the researcher now. Even to some extent, the institution can bear that burden of selecting the journals. Higher education institutions are expected to constitute internal review committees, adopt the suggestive parameters of their context. A concrete IQSC action item for two college hosting this PDF FDP can be managed. Therefore, अभी हमको एक और स्किल सीखना पड़ेगा। वो स्किल क्या है कि जर्नल एवेल्युएशन स्किल। एक जर्नल को एवेल्युएट करने का स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा जर्नल आपके लिए सूटेबल है, कौन सा जर्नल आपका कंटेंट को पब्लिश कर सकता है या नहीं कर सकता है। So you have to gain that skill of choosing the journal by experiencing yourself. लेकिन इस सेशन में हम लोग ये जर्नल चूजिंग स्किल को हम लोग we will try to reduce it to the 15 minutes activity
तो हम 15 मिनट्स थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, उनको देखेंगे, क्या क्या कंसिडरेशंस को हम लोग मायने में रखना है वो देखेंगे. देन यू विल बी एबल टू डिसाइड ऑन द जर्नल दैट यू वांट टू पब्लिश. ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं. नाउ, so in this entire session we are going to learn the 11 tools that are available either free or subscription है, तो either your college has subscribed or your university has subscribed to it already. ठीक है. Now, so first question is about the author. ठीक है, author का existence. So what is it? Who am I? And will the world find my work? Who am I and will the world find my works? Can be answered using a tool Orchid. Orchid, right? Orchid क्या करता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके. Let us see this all these 6 questions here and which tools can be applicable for that. What is already known? हमको क्या पता है, या फिर what is already existing, the literature that is already existing. Where you can find the tools that you can apply for finding the literature is Scoopers, Web of Science, Google Scholar, OpenLX. Where I am keeping what I can find, what I find. तो आपने लिटरेचर भी फाइंड आउट कर लिया, क्या एग्जिस्ट करता है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आप उसको कहाँ पे रखेंगे? उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए आप रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स जो है बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री वर्जन्स जो है सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ. जोटेरो एंड मेंडल. एंड नोट भी है एल्सवेयर का, आप देख सकते हैं, लेकिन बट इट इज ऑलमोस्ट फॉर you have to make the payment. Even Mendeley also to some extent it is free, and the rest if you want to upgrade the storage and all you have to pay for that. Zotero is also having a free version and also a paid version. So दोनों में थोड़ा सा अंतर है, but free version of Zotero and Mendeley is fine for a researcher at our level, at a college level or maybe assistant professor level. Okay, if somebody is doing some more no scientific or more advanced research, then people may find it helpful to subscribe for the paid versions. So इसके बाद next question आता है कि what did I promise to do and what I did, what I do, did it do it, what did I do it. ठीक है, तो इसमें आपका tools काम आते हैं. OSF. OSF stands for Open Science Framework and Prisma. Prisma model, Prisma 2020, you might be knowing that no, it is helpful for a review, systematic reviewing. Okay, but Prisma is having a lot of variations, lot of specific review types models, which I'll be discussing in the later part. We will see what it is. Then next question आपको उठता है कि what do the data actually say? So what do the data actually say? You can use the tools like R, Python, SPSS. SPSS is a paid version, I'm telling you, but there is a free version of SPSS also for students. Okay, for academic purpose, you can have this. So can I stand behind every word of this? तो जो आपने आपका आइडेंटिटी से लेके क्या पब्लिश्ड है वो जानने के बाद उसको कहाँ पे स्टोर किया, फिर आपने रिव्यू कैसे किया और रिव्यू में क्या क्या आपने बताया है, फिर डाटा को एनालाइज करके डाटा में आपने क्या क्या जाना है, उसको जब आप रिपोर्ट करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में, और रिपोर्ट राइटिंग करने के बाद उस रिपोर्ट जो बोल रहा है उसमें जो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो स्टेटमेंट्स आपने दिया है, रिजल्ट जो आपने जो दिया है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं या नहीं लेते हैं. वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है. यहाँ पे टर्न इट इन रेस्पॉन्सिबल एआई यूज. ठीक है, टर्न इट इन यूज कर रहे हैं या फिर एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, या एआई टूल्स का मतलब जनरेटिव एआई टूल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. तो जो चैट जीपीटी है या फिर आपका क्लाउड है, ठीक है, तो जेमिनी है. So there are a lot of tools, generative AI tools, but are you taking the responsibility?
for whatever the report is saying as an author. That we will be discussing. So the next is we will come to the first question, where the identity, who am I, and will the word find my work. तो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल. जनरली क्या होता है कि आपको जब टूल्स अवेलेबल होते हैं तो हर एक टूल का काम अलग अलग होता है. यहाँ पे स्कॉलरली डाटाबेसेस मैच पब्लिकेशंस टू पीपल बाय नेम स्ट्रिंग्स, राइट. स्कॉलरली पब्लिकेशंस क्या होता है कि अपना नेम का स्ट्रिंग से मैच करते हैं. नेम स्ट्रिंग्स आर अनरिलायबल एवरीवेयर एंड दे आर स्पेशली अनरिलायबल इन इंडिया. तो इंडिया में ये ज्यादा कंफ्यूजन होता है. सो कंसिडरिंग ए सिंगल रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर whose वर्क में बी इंडेक्स्ड एज, यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल दिया हूँ. यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नाम को अलग अलग वेरिएशंस में कैसे लिखा जाएगा. आलदर्ती RR, आलदर्ती राजेश रंगप्पा, राजेश RA, RR आलदर्ती, रंगप्पा AR. सो इतना वेरिएशंस नेम में हो सकते हैं. जब आपका आइडेंटिटी की बात आएगा तो कौन सा नेम का कहाँ पे कौन सा डाटाबेस में किस तरह से यूज हुआ है आपको पता नहीं चलेगा. तो यहाँ पे आपको काम आता है आपका ऑर्किड ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी. सो व्हाट इट डज, and this is before we account for regional translation variants. Initial first convention is South India, patronymic surnames and name changes after marriage. ये सारे reasons है ये सब variations आने का. Add to this tens of thousands of researchers who legitimately share the same name. उसके साथ में और एक प्रॉब्लम ये है कि एक नाम से, राजेश के नाम से इंडिया में कितना लोग रहेंगे. सपोज देयर इज ए सरनेम कॉल्ड एज मिश्रा, सिन्हा, गुप्ता. इस सरनेम से कितना लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. सो द आइडेंटिकल नेम इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. तो उसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. सो अवॉइड दिस. द रिजल्ट इज द रियल पर्सन साइटेशन रिकॉर्ड्स फ्रैगमेंट्स अक्रॉस 4 to 5 गोस्ट प्रोफाइल्स. तो इसके वजह से बहुत सारे गोस्ट प्रोफाइल्स आपके बन जाते हैं. So none of which reflects their actual output. तो एक प्रोफाइल में आपका 3-4 पब्लिकेशन चला गया, दूसरा प्रोफाइल में आपका 3-4 पब्लिकेशन चला गया, तीसरे में 5-6 पब्लिकेशन चला. आपका 20 पब्लिकेशन है तो 20 आपका 5-6 गोस्ट प्रोफाइल्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो एक जगह पे सब मिलने का चांसेस कम हो जाएंगे. सो ऑर्किड क्या है? ऑर्किड क्या है? इज ए फ्री परसिस्टेंट 16 डिजिट आइडेंटिफायर है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 डिजिट, 4 डिजिट्स का डिविजन किया हुआ है. 16, 4 into 4 16, इश्यूड बाय आर्किड. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है that belongs to you and travels with you across institutions, publishers, funders, countries for your entire career. आपने एक बार ऑर्किड आईडी बना लिया और ये ऑर्किड आईडी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, कोई भी कंट्री में जाइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, कोई भी फंडिंग एजेंसी से आप लीजिए, लेकिन ये ऑर्किड आईडी आपका सेम रहेगा जिंदगी भर के लिए. तो इट इज रिसर्चर्स इक्वलेंट टू डीओआई. तो एक आर्टिकल का डीओआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कैसे होता है, वैसे ही ऑर्किड आईडी जो है वो एक रिसर्चर का आइडेंटिटी का इंडिविजुअलिटी है, ठीक है. इसको कभी ये सेम नहीं हो सकता, किसी का अलग अलग यूनिक होगा. तो a growing majority of journals require a ORCID ID from at least one corresponding author at the submission. ठीक है. तो जब आप आर्टिकल सबमिट करेंगे एक पब्लिशर को तो एटलीस्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर्स का करस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास 4 ऑथर है तो 4 में से जो करस्पॉन्डिंग ऑथर रहेंगे उनका ऑर्किड आईडी जरूर मांगते हैं. विदाउट दैट यू कैन नॉट सबमिट ए पेपर. ठीक है. So the funders increasingly require it in a grant applications. तो फंडिंग एजेंसीज है वो लोग भी आपको ऑर्किड आईडी पूछते हैं. और ये ऑर्किड आईडी की वजह से इट मेक्स IQAC, NAC, APA, CAS documentation travelia. Your record is already assembled in one place, machine readable format में एक सिंपल एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है.
It resolves the promotional committee argument about which publications are actually yours. तो प्रमोशन कमेटी होता है आपका, जब आपका प्रमोशन करने वाला है तो उस टाइम में कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आपको उनको भी हेल्पफुल रहेगा कि आप जाके आपका आपके डेली चेक करने से आपको सब कुछ आपका पब्लिकेशन कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, सब आपको मिल जाएगा। उन लोगों को भी वेरीफाई करने का पॉसिबिलिटीज है। तो इसको करना क्या होगा, orchid.org में जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे और आपका जो डिटेल्स है वहां पे आप अपलोड करेंगे। आप अपना एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल एक्टिविटीज सब कुछ वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ में आप अकाउंट सेटिंग में जाके ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में ऑथराइज करके क्रॉस रेफ डाटा साइट को एक्टिवेट करने से आपका जितने भी, जैसे ही नया पब्लिकेशन होता है डीओआई के साथ में अगर है, तो वो ऑटोमेटिकली फेच होके आपका आर्किड आईडी में आ जाएगा। तो इसमें डेमो में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द नो ऑडियंस हियर पार्टिसिपेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस ऑर्किड आईडी। तो सेम ऑर्किड आईडी के जैसे ही आपका सर्च लिंक विजार्ड है ऑर्किड आईडी में, जो आपको स्कूपस ऑथर आईडी से लिंक कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस रिसर्चर प्रोफाइल से भी आप लिंक कर सकते हो। और इसके साथ में पीयर रिव्यू एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इन वेब ऑफ साइंस कैन ऑल्सो फ्लो इनटू द आर्किड आईडी, जो मतलब सिर्फ पब्लिकेशंस नहीं, पब्लिकेशंस के अलावा जो आप रिव्यू कर रहे हैं, अब अगर आपको कुछ रिव्यू के लिए कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप रिव्यू करके सबमिट कर रहे हैं, तो वो रिव्यू का रिकॉर्ड भी आपका आर्किड आईडी में रिकॉर्ड हो जाएगा एंड इट इज अवेलेबल। सो जो वर्क डीओआई के साथ में नहीं है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स के साथ में जो नहीं आते, जैसे कि बुक चैप्टर्स है, स्मॉल पब्लिशर्स है जो डीओआई प्रोवाइड नहीं करते, कॉन्फ्रेंस पेपर्स है, रिपोर्ट्स है, ये सबको आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। ऑर्किड ऑर्किड को यूज करने के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि डुप्लीकेट ऑर्किड रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो people register twice, forget the first, split their records. So ये सब में ऑर्किड जो कांटेक्ट हेल्प सेंटर होता है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट करके उसको हटा सकते हैं। आप सिंपली डिलीट मत कीजिएगा, कौन सा वाला आपको काम कर रहा है तो कौन सा वाला नहीं कर रहा है वो आपको पता नहीं रहेगा, तो बेटर है कि उसको मर्ज करने के लिए बोलिए। तो मर्ज करने से आपका रिकॉर्ड एक ही बन जाएगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन द लेटर। Scooper's author ID is auto-generated by elsewhere and can be corrected through the Scooper's author feedback wizard. And Web of Science researcher profile observed Publons in 2022 and carries your researcher ID but verified peer review record. Then ROR Research Organization Registry does for institution. So ये जो ROR है, ये ऑर्किड जो करता है पर्सन के लिए, वैसे ही इंस्टीट्यूशन का आईडी बनाता है आरओआर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री। तो यहाँ पे जाके आपका इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन नहीं करके हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल आप कर सकते हैं, जो आपको एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह में सबमिशन के लिए काम आएगा। ऑर्किड टेक्स 10 minutes once and then works for 40 years. तो आप एक बार 10 मिनट अपना टाइम स्पेंड करके ऑर्किड आईडी क्रिएट कर लेंगे, तो बाकी 40 साल 50 साल के लिए वो आपके लिए काम करेगा। सो देर इज नो अदर आइटम इन दिस किट विद दैट रेशियो ऑफ रिटर्न। तो मेरा जो 11 टूल्स है, 11 टूल में से ये इस लेवल का रिटर्न परसेंटेज कोई भी टूल नहीं दे पाता है। दैट इज 10 minutes इज टू ऑलमोस्ट 50 years ऑफ रिटर्न। सो नेक्स्ट स्टेटस है आपका डिस्कवरी, व्हाट इज ऑलरेडी नो। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर एंड ओपन एलेक्सा के बारे में। तो पहला स्टार्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कूपस। तो स्कूपस अभी करेंटली एल्सवेयर के अंडर में है एंड क्यूरेटेड अब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस है। ये 2004 में लॉन्च हुआ था विथ कंटेंट selection governed by independent
कंटेंट सिलेक्शन एंड एडवाइजरी बोर्ड है उसका, वो इसका कंटेंट को सेलेक्ट करता है, CSAB बोलते हैं इसको, दैट रिव्यूज टाइटल्स ऑन रोलिंग बेसिस। हर वक्त ये रोलिंग बेसिस पे हर एक कंटेंट को रिव्यू करता है और जो सुटेबल है उसको इंडेक्स करता है, और जो सुटेबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ उसको लगता है कि उसका स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हटा दिया जाता है। So it indexes roughly 28,000 active peer-reviewed journals. So how much is the coverage? It is 28,000 active peer-reviewed journals इसके इस database के अंदर में है, and in the region of 43,000 plus total resources, including the title, book series, conference proceedings, and trade publications are included, amounting to something like no कि सिर्फ जर्नल्स की बात करेंगे तो 28,000 एक्टिव पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, और आप दूसरा फॉर्मेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे जैसे कि 43,000 प्लस रिसोर्सेस हो जाते हैं, टोटल बुक सीरीज, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ट्रेड पब्लिकेशंस, नो, एंड द एक्टिव जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल, सब मिला के 43,000 प्लस होते हैं इन टोटल। इसका कॉर्पस जो है, रिकॉर्ड का जो कॉर्पस है, ये 90 to 100 मिलियन रिकॉर्ड्स का माना जाता है आज के डेट में। ठीक है, यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ इट, होस्टिंग 90 to 100 मिलियन रिकॉर्ड्स। सो इट मेट्रिक्स व्हाट दे एक्चुअली मेजर, ये करते क्या है, साइट स्कोर मेजर करते हैं। ये 4 ईयर साइटेशन विंडो होता है जिसमें अनलाइक द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में क्या होता है कि आप 2 साल का साइटेशन स्कोर्स लेते हैं, ठीक है, और टोटल जर्नल कितना आर्टिकल्स पब्लिश हुआ 2 साल में और कितना साइटेशंस आया उसको डिवाइड करते हैं, तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाता है। लेकिन साइट स्कोर में आप 4 ईयर का साइटेशन विंडो लेते हैं, मतलब 4 ईयर्स का जितना टोटल साइटेशंस आया और आपका टोटल 4 ईयर्स में कितना पब्लिश किया है जर्नल, तो उससे डिवाइड करते हैं तो आपको साइट स्कोर मिलता है। तो दिस स्कूपर्स वर्क्स ऑन साइट स्कोर विच इज 4 ईयर साइटेशन विंडो पे काम करता है। देन यू हैव द SJR स्कीमागो जर्नल रैंकिंग करता है, प्रेस्टीज वेटेड, ए citation from highly cited journal counts more than one from an up score 1। ठीक है, तो ये एक अच्छा जर्नल में जो साइटेशन मिलता है उसका वैल्यू जो नॉर्मल जर्नल में या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा लो ग्रेड जर्नल में जो साइटेशन आपको 2-3 भी मिलता है तो उससे ज्यादा बेटर होता है। तो ये सब आपको स्कीमागो जर्नल रैंक में आपको देखने को मिलेगा। देन यू हैव वन मोर, दैट इज SNIP। SNIP स्टैंड्स फॉर सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर माना जाता है। सो ये फील्ड नॉर्मलाइज्ड होता है फ्रॉम, ये करता है कौन है, CWTS लिंडन। इट इज वन ऑफ इट इज द वन टू यूज व्हेन कंपेयरिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स। तो एक डिसिप्लिन और दूसरे डिसिप्लिन के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है, रेंज एवेल्युएशन करना होता है, तो उस टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है SNIP का। सपोज बिकॉज ए केमिस्ट्री जर्नल एंड ए हिस्ट्री जर्नल लाइव इन कंप्लीटली डिफरेंट साइटेशन इकोनॉमिक्स, राइट। सो दोनों का साइटेशन जो कॉम्प्लेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, वो बिल्कुल अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा और आपका हिस्ट्री वाला जर्नल का भी अलग होगा। तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए आपको SNIP का नॉर्मलाइज सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पीयर पर पेपर यूज करके आपको करना पड़ेगा। व्हेन एंड व्हाई टू यूज इट, कब और कैसे यूज करना है, चूजिंग वेयर टू सबमिट एंड चेकिंग दैट द जर्नल इज जेन्युइनली इंडेक्स्ड। तो इसमें पहला काम है कि आपको कोई जर्नल बोलता है कि स्कूपस इंडेक्स्ड है, तो आपको स्कूपस सोर्स पे जाके चेक करना पड़ेगा। scoopers.com/sources अगर आप टाइप करेंगे आपका वेब ब्राउजर में, तो आपका स्कूपर्स का डाटाबेस खुल जाएगा, और डाटाबेस नहीं, सर्चिंग प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। वहां पे जाके आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, ISSN नंबर डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल वो जर्नल जो है वो इंडेक्स्ड है कि नहीं है। ठीक है, अगर इंडेक्स्ड है तो आप उस जर्नल पे क्लिक कीजिए, तो आपको कौन सा डेट से कौन सा डेट तक, दैट मीन्स फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर तक कवरेज है। हो सकता है 25 तक कवरेज था, अभी नहीं है, या 26 तक कवरेज है, तो इस साल भी कवरेज है उसका। ठीक है, कोई कोई जर्नल डिसकंटिन्यू हो जाता है इंडेक्सिंग से बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। ओके,
सो उसको आप चेक करना है, चेक करके डिसाइड करना है कि कौन सा जर्नल सही है या कौन सा जर्नल रियली इंडेक्स्ड और नॉट इंडेक्स्ड. The free part almost nobody uses is it's publicly accessible. ये scoopers.com/sources जो है ये freely accessible है. ये इसका कोई subscription का जरूरत नहीं है. You can look up any journal, confirm whether it is currently indexed, see its site score and quartile, check the discontinued titles, list of journals removed from quality or the metrics concerns. Check this before you submit. कोई भी जर्नल में सबमिट करने से पहले आप इसको चेक कीजिए. ठीक है. लेकिन स्कूपर्स का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको. कवरेज स्क्यूज इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इसका कवरेज जो है ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है. दूसरा लैंग्वेजेस को इतना कवर नहीं करते हैं. स्टेम, स्टेम इज इंजीनियरिंग रिलेटेड एस्पेक्ट, तो वहां पे ज्यादा हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है और ग्लोबल नॉर्थ का पब्लिकेशंस ज्यादा कवर करता है, ग्लोबल साउथ का नहीं करते हैं. और हम कहाँ पढ़ते हैं? हम ग्लोबल साउथ में पढ़ते हैं, तो हमारा इंडियन पब्लिकेशंस ज्यादातर स्कूपर्स में विजिबिलिटी नहीं हो पाता. देन द बैक फाइल जो है इसका 1970 से अवेलेबल है. ठीक है. और बिफोर 1970 का जितने भी आर्टिकल्स या पब्लिकेशंस है वो आपको स्कूपर्स में देखने को नहीं मिलेगा. तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है. और बुक्स एंड ह्यूमैनिटी मोनोग्राफ्स आर पूरली रिप्रेजेंटेड. तो इसमें जो ह्यूमैनिटीज और बुक्स ज्यादा नहीं है, और ह्यूमैनिटीज का मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो भी ज्यादातर इंडेक्स नहीं किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता नहीं है. और तीसरी बात ये है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव. मोस्ट फर्स्ट कॉलेजेस डू नॉट हैव इट, तो किसी के पास नहीं होता है. Then comes your Web of Science. Clarivate इसका ओनर है, जो है ओन करता है. What is it and why its lineage matters? Web of Science descends directly from Eugene Garfield's Science Citation Index. एक हमारा लाइब्रेरी प्रोफेशनल एक्सपर्ट थे जो यूजिन गारफील्ड बोला जाता है उनको. ये इन्होंने एक साइंस साइटेशन इंडेक्स क्रिएट किया था 1964 में. उसका बेसिस पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में काम करते थे और वहीं से इसका स्टार्ट हुआ था. तो इसका बेसिस पे बहुत सारे साइटेशन इंडेक्सिंग का स्टार्ट किया गया लेटर लेटर में. तो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको जानना है कि जब भी कोई बोलता है कि हमारा वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, तो वेब ऑफ साइंस में बहुत सारे साइटेशन इंडेक्सिंग है. ठीक है. साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 9400 जर्नल्स है. ठीक है. देन यू हैव द सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3500 जर्नल्स है. और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1800 जर्नल्स है. देन अभी लेटली दे हैव स्टार्टेड इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स जो अप्रोक्सीमेटली 7800 टाइटल्स को कवर करता है, प्लस सीपीसीआई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स एंड बुक्स का बीकेसीआई बुक साइटेशन इंडेक्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग साइटेशन इंडेक्स, ये भी अवेलेबल है. तो जब भी कोई पब्लिशर अगर क्लेम करता है कि हम वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड है, तो आपको पूछना चाहिए कि कौन सा साइटेशन इंडेक्स में कवर किया गया है. ठीक है. तो बिहाइंड द कोर कलेक्शन sit regional and special indexes like Sky Yellow, a citation index, KCI, Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, Arabic Citation Index, BIOSIS, Medlin, and Data Citation Index and Preprint Citation Index are also available in Web of Science. तो इतने सारे citation index है, तो इसमें से किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो जर्नल को, जर्नल किसमें आता है, किसमें इंडेक्स है, वो आपको जानना जरूरी होता है. ठीक है. So when a journal's website tells you we are indexed in Web of Science, your next question must be which index? ECSI is not SCIE. So many appointment
and promotion committees count them differently. तो ये जो कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी है या प्रमोशन कमिटीज है, ये अलग अलग इंडेक्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं, एक जैसे नहीं देखते हैं। अगर कहीं पे अवेयरनेस नहीं है तो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स बोलने से वो लोग मान लेते होंगे, लेकिन जिसको नॉलेज है वो लोग इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो आपका इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स में अगर इंडेक्स्ड है तो वो साइंस साइटेशन इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, so you should be very careful with what the journal is claiming. और इसका जो मैट्रिक्स है वो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स प्रोड्यूसेस द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, JIF बोलते हैं। ये 2 year विंडो है एंड सिंस 2023 एक्सटेंडेड टू ECSI एंड AHCI। तो ये पहले साइंस साइटेशन इंडेक्स और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स के लिए ही, जर्नल्स के लिए बनाया जाता था जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन अभी 2023 से ये 4 डाटाबेसेस को, 4 साइटेशन इंडेक्स को एक्सटेंड किया गया, जो कि आपका इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स का जर्नल्स को भी कवर करता है। देन JCI, जर्नल साइटेशन इंडिकेटर, इज ए फील्ड नॉर्मलाइज्ड कंपेनियन मैट्रिक्स है जिसको आप चेक कर सकते हो। द फ्री पार्ट्स, द मास्टर जर्नल लिस्ट, इसका जो मास्टर जर्नल लिस्ट है ये अवेलेबल है आपको mjl.clarivate.com पे, ये फ्री है। सर्च एनी जर्नल, see exactly what which index it covers. Then it also includes manuscript matcher, which suggests candidate journals from your title and abstract. ठीक है, तो यहाँ पे आप मैन्युस्क्रिप्ट मैचर में जाके आप मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट आप देखना चाहते हैं उसको मैच करके देख सकते हैं, उसका abstract और टाइटल आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री एंड यूजफुल स्कीमागो JR है .com, यहाँ पे SJR वैल्यूज एंड क्वार्टल्स अवेलेबल है, वहां पे भी ये स्कीमागो JR.com जो है वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसका कौन सा क्वार्टर में पब्लिश होता है, Q1 Q2 Q3 Q4, उसका साइट स्कोर क्या है, वो सब भी आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसका जो बैक फाइल है, जो पुराना जो पाइल अप है, मतलब जो कवरेज है, वो 1900 से अवेलेबल है, उससे पहले का इसमें भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, तो क्लासिकल पेपर्स वगैरह ढूंढने का कोशिश करेंगे या फिर उसका साइटेशंस ट्रैकिंग करने का कोशिश करें तो ध्यान में रखना होगा कि ये उसमें अवेलेबल नहीं हो। 1900 के बाद के जितने भी है वो अवेलेबल हो। तो इसमें वेब ऑफ साइंस का जो लिमिटेशंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्कूपस से थोड़ा नैरो हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा था 28,000 जर्नल्स। ठीक है, और ये थोड़ा स्कूपस से भी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। रीजनल एंड नॉन इंग्लिश स्कॉलरशिप इज अंडर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे भी रीजनल और नॉन इंग्लिश स्कॉलरशिप यानी कि पब्लिकेशन जो है थोड़ा सा अंडर रिप्रेजेंटेड है स्कूपस के कंपेयर में। थोड़ा मतलब स्कूपस में ज्यादा रीजनल एंड नॉन इंग्लिश पब्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वेब ऑफ साइंस में और भी कम हो जाता है इसका। देन कम्स योर नेक्स्ट वन इज गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर के बारे में कौन नहीं जानता है, सब लोग ही जानते हैं। तो ये एक फ्री नॉन लॉग इन एकेडमिक सर्च इंजिन है विथ ब्रॉडेस्ट रीच ऑफ एनी टूल्स इन दिस सेशन। तो जिसका रीच, जितना भी टूल्स, हम 11 टूल्स डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रीच इसका होता है गूगल स्कॉलर का। ठीक है, तो the it index journal articles, conference papers, theses, dissertations, books, preprints, technical reports, patents, court opinions, content sittings in institutional repositories, including, it just includes the great deal of Indian scholarship that never reaches the scoopers एंड वेब ऑफ साइंस, जो मतलब आपका वेब ऑफ साइंस और स्कूपर्स में जो पहुंचता भी नहीं है उसको भी ये गूगल स्कॉलर आपको इंडेक्स करके देता है, जो क्लास करके जो आपका इंडियन पब्लिकेशंस होते हैं उसको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो किस लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज फॉर ग्रे लिटरेचर के लिए, रीजनल जर्नल्स के लिए, डेजर्टेशंस, नॉन इंग्लिश वर्क्स के लिए, नथिंग एल्स कम्स क्लोज। तो कोई भी डाटाबेस इसके सामने मैच नहीं करता है। All-in versions, the link quietly finds you the legal free PDF
और paywalled papers usually from the author's repository deposit. तो author repository deposit से ये इंडेक्स करके आपको फ्री वर्जन पीडीएफ देता है या फिर paywalled papers भी दे देता है. तो ये गूगल स्कॉलर का सेटिंग में जाके अगर आप लाइब्रेरी का लिंक ऐड करते हैं, मतलब आपका इंस्टीट्यूशन का नाम वहां पे ऐड करते हैं, तो ONOS के द्वारा जितने भी कॉन्फ़िगर्ड मतलब एक्सेस जितने भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे गूगल स्कॉलर में दिखाई देंगे. मतलब आपका इंस्टीट्यूशन ONOS से सब्सक्राइब्ड है और सब्सक्रिप्शन ले रहा है, एक्सेस है ONOS का, और आपने अपना प्रोफाइल में जाके इंस्टीट्यूशन का नाम अपना सेटिंग्स में डाल दिया. तो जब आप सर्च करेंगे ONOS के थ्रू जितने भी सब्सक्राइब डॉक्यूमेंट्स या पब्लिकेशंस होंगे, वो आपको स्कॉलर में डिस्प्ले करेंगे और एक्सेसिबल भी होगा, फ्रीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ONOS का साइट पे जाके सर्च करने का जरूरत नहीं है. आप प्रोफाइल में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम अपडेट कीजिए और आपको डायरेक्टली स्कॉलर में ही जो ONOS का जितने भी पेड सब्सक्रिप्शन पब्लिकेशन है वो सब आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा करके देखिएगा, जाके गूगल स्कॉलर में अपना प्रोफाइल में इंस्टीट्यूशन का नाम अपडेट करिए. अगर आपका कॉलेज का एक्सेस है ONOS पे, तो उसका जो पहले नहीं दिखाते हैं वो दिखाई देने लगेंगे. फिर इसमें आप देख सकते हैं कि साइटेशन चाइनिंग कैसे एग्जिस्ट करता है, कि कौन सा आर्टिकल को कितना लोग साइट किए हैं, कहाँ से साइट किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं. मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज डू दिस एक्टिविटी टुडे. One is you have to set alert for Google Scholar कि चूज एक टॉपिक के ऊपर आप अपना अलर्ट सेट कीजिए और अपने नाम से एक अलर्ट सेट कीजिए, और जो स्कॉलर या फिर जो ऑथर जो आप मानते हैं या चाहते हैं ये आपको अपडेट मिले, उनका भी एक अलर्ट सेट कर लीजिए. फिर 5 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगने वाला है. ठीक है, आप करके देख सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा. आपको ऑटोमेटिकली मेल्स आने लगेंगे जो जैसे ही अपडेट्स मिलते रहेगा. सो यूर स्कॉलर प्रोफाइल जो है ये पब्लिक है, फ्री है. इसमें आपको H इंडेक्स और I10 इंडेक्स दिखाई देता है एंड इज ऑफ्टन फर्स्ट थिंग टू सर्च फॉर योर नेम रिटर्न्स. ठीक है, तो पहला कुछ भी अगर रिट्रीव होता है तो गूगल स्कॉलर का रिजल्ट ही रिट्रीव होता है. तो इसमें इस टूल का लिमिटेशन यही है कि इसमें गूगल स्कॉलर में कोई भी देर इज नो क्वालिटी कंट्रोल एट ऑल. ठीक है, इट इंडेक्सेस प्रीडिएटरी जर्नल्स अलोंगसाइड द नेचर जैसा फेमस पीयर रिव्यूड हाईली रेटेड जर्नल्स के साथ में नेचर का आर्टिकल भी दिखाएगा और आपका पीडिएटरी जर्नल्स का रिजल्ट्स भी दिखाएगा. So you don't know what it is going to fetch. It will give you the highest quality, it will give you the lowest quality also. The presence in Google Scholar says nothing whatever about the quality. तो गूगल स्कॉलर में मेरा इंडेक्स हो गया बोल के आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका क्वालिटी अच्छा है या पब्लिकेशन का क्वालिटी अच्छा है. सो इट इज नॉट ए क्वालिटी मेजरिंग टूल एट ऑल. स्कूपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका पब्लिकेशन क्वालिटेटिव है, लेकिन गूगल स्कॉलर में अवेलेबल है बोल के आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज द क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट मेंटेन्ड बाय गूगल स्कॉलर. दूसरे डाटाबेस में स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस में अगर आप सर्च स्ट्रिंग यूज किए हैं, कोई भी सर्च स्ट्रिंग आप बनाते हैं सर्च करने के लिए, उसको यूज करते हैं, तो उस सर्च स्ट्रिंग यूज करने से आपको रिजल्ट जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब मेरा 25,000 रिकॉर्ड्स आया एक सर्च टर्म के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम उसी सर्च टर्म से करने से 25,000 रिकॉर्ड्स रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा आपका. लेकिन गूगल स्कॉलर में ऐसे नहीं होगा. आपने एक टाइम सर्च किया तो आपको 10,000 दिखाएगा, दूसरा टाइम सर्च किया तो 50,000 दिखाएगा, तीसरा टाइम सर्च किया तो 25,000 दिखाएगा. ऐसे वेरिएशन होगा. और इसके साथ में लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी आपका गूगल स्कॉलर का रिजल्ट वेरिएट करता है. ठीक है, तो इवन इन दैट केस ऑल्सो इट्स एक्चुअली द रिजल्ट्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल. सो आप इसलिए इसको सिस्टमेटिक रिव्यू करने के टाइम में आप गूगल स्कॉलर डाटाबेस यूज करके सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं बोल के बोल नहीं सकते.
You cannot use this database for systematic review. और ऊपर से इसमें बल्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे स्कूपर्स या वेब ऑफ साइंस में आप क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्ड्स को लिस्ट आउट करके सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक द स्कूपर्स इज गिविंग अराउंड 5000 रिकॉर्ड्स नाउ। पहले तो बहुत ज्यादा कर सकते थे, लेकिन अभी लिमिटेशन लगा दिया है, तो ओनली 5000 रिकॉर्ड्स यू कैन डाउनलोड। वेब ऑफ साइंस में आई थिंक इट इज लेस देन दैट, मे बी 1000 और आई एम नॉट श्योर, बट या मे बी अराउंड 1000 रिकॉर्ड्स यू कैन डाउन एट वन गो। तो इसको बैचेस में करना पड़ेगा। आपके पास 20,000 रिकॉर्ड्स डाउनलोड करना है तो 4 बार करना पड़ेगा स्कूपर्स में, और वेब ऑफ साइंस में 20 बार करना पड़ेगा। और जो गूगल स्कॉलर का जो साइटेशन काउंट्स है, ये डुप्लीकेट है, नॉन स्कॉलरली सोर्सेस एंड सेल्फ साइटेशंस भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिवली गेमेबल है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, तो फैब्रिकेटेड डाटा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू की बात करते हैं, जो प्रिज्मा एस जो सिस्टमेटिक रिव्यू का जो फ्रेमवर्क है, प्रिज्मा एस, एस फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू, सप्लीमेंट्री सर्चिंग is a legitimate and a reportable part of systematic review. तो use the Google Scholar for that, for gray literature and for catching what the curated database missed. The report exactly how you used it cannot be reproduced. ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको सिस्टमेटिक। Now coming to the next one, that is the Open Alexa. ओपन एलेक्सा इज वन टू पे द क्लोजेस्ट अटेंशन। इसमें आपको देखने को ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको सुनिएगा, क्योंकि जहां पे वेब ऑफ साइंस स्कूपर्स नहीं है, वहां पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन का या पर्सन का प्रोफाइल, बिब्लियोग्राफिक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे काम आएगा आपका ओपन एलेक्सा। ओपन एलेक्सा क्लोजेस दिस गैप कि आपके पास स्कूपर्स नहीं है, वेब ऑफ साइंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली ओपन एलेक्सा यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये फुल्ली ओपन CC0 लाइसेंस्ड कैटलॉग फॉर ग्लोबल रिसर्च सिस्टम है। इसमें क्या होता है? वर्क्स, ऑथर, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेस, टॉपिक्स, पब्लिशर्स, फंडर्स एंड अवार्ड्स built by non-profit as a successor to Microsoft Academic Graph. ये MAG जो है एट द एंड ऑफ 2021 इसको बैन स्टॉप कर दिया गया, और उसका अल्टरनेटिव में इसको ओपन एलेक्सा के नाम से लॉन्च किया गया। इसका बेसिकली नेम कहाँ से आता है? ये लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा है, तो इसको अलेक्जेंड्रा एलेक्स के नाम से रखा जाता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ there is around 477 to 480 million works are covered or indexed in this open alexa. ठीक है, आप गूगल में जाइए, ओपन एलेक्सा मार के देखिए और आपका टॉपिक सर्च करके देखिए, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेगा विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फर्दर आप अगर आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसका एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिया है, आप ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा। स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर एंड एलेक्सा, ये ओनरशिप किस किस का है हमने दिया है। एल्सवेयर, क्लैरिवेट, गूगल, ये सब दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाद में मैं प्रेजेंटेशन जो है शेयर कर दूंगा ऑर्गेनाइजर से, आप लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस मैनेजर जो है, हम लोगों में से कितना लोग है जो एटलीस्ट हम लोगों ने अपना रेफरेंसेस वगैरह को रिफॉर्मेट करने का कोशिश किया है, और एंड वी हैव वेस्टेड और स्पेंट हावर्स ऑफ टाइम। तो हमको APA स्टाइल में हमने रेफरेंसेस ले दिया, और कोई जर्नल बोल रहा है कि हमको चिकागो या MLA स्टाइल में चाहिए, तो उस रेफरेंसेस को ठीक करने के लिए हम लोग अपना घंटों का समय जो है व्यर्थ किया होगा उसमें। बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस किया होगा, इवन इनिशियली आई डिड द सेम थिंग्स। सो ये जो टाइम है,
इसको हम बचाने के लिए हम लोग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें फ्री में एक्चुअली क्या होता है कि रेफरेंस मैनेजर्स में कि आप कैप्चर कर सकते हैं citation and wherever possible the PDF in one click from a database, जर्नल पेज और रेपोजिटरी, आप पूरा का पूरा साइटेशन उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स, स्टैग्स, सेव्ड सर्चेस, नोट्स, एनोटेशंस, डुप्लीकेशंस वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं। फ्रॉम गूगल वर्ड, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस, गूगल डॉक्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली साइटिंग एंड रेफरेंस क्रिएटिंग इज वेरी इजी। रीफॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक APA स्टाइल टू चिकागो स्टाइल टू MLA टू हार्वर्ड, कोई भी मिनटों में या सेकेंड्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं पूरा डिटेल्स। सो कमिंग टू द जोटेरो टूल, Zotero is free and open source, developed by the Corporation of Digital Scholarship, originating at the Roy Rosewing Center of History and New Media, जॉर्ज मैनसन यूनिवर्सिटी से है, एंड नॉट ओन्ड बाय ए पब्लिशर, ये किसी पब्लिशर से ओन नहीं है, इसलिए फ्री है। जोटेरा कनेक्टर एक एक्सटेंशन है जो आपका सिस्टम में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ब्राउजर कनेक्टर भी है, और उसको भी आप डाउनलोड करके आपका ब्राउजर के साथ में लिंकअप कर सकते हैं। रिट्रीव मेटाडाटा फ्रॉम द PDF, ड्रैग इनटू द फोल्डर, देन अननेम्ड PDF वगैरह जो है उसको राइट क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मेटाडाटा को एंड अल्टर कर सकते हैं। ये वर्ड, लिब्रे ऑफिस, गूगल डॉक्स के साथ में प्लग इन कर सकते हैं। ओवर 1000 10,000 साइटेशन स्टाइल्स को इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट वन और टू, 10,000 रेफरेंस स्टाइल्स को ये अकोमोडेट करता है, एंड यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन रेफरेंस स्टाइल टू द अदर रेफरेंस स्टाइल। इसके अलावा आप ग्रुप लाइब्रेरी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे फ्री एंड अनलिमिटेड मेंबर्स है, सुपरवाइजर्स एंड द रिसर्च स्कॉलर्स और एंटायर डिपार्टमेंट कैन बिल्ड the shared corpus, excellent for FTP follow throughs, create one group library for this cohort। तो आप ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए जोटेरो में। इसके जोटेरो में एक एडवांटेज है कि ये PDF रीडर विद एनोटेशंस आता है, तो आप कोई भी नोट एनोटेशंस वगैरह कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और उसको एक PDF नोट के रूप में आप डाउनलोड बाद में कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, फर्स्ट 300 MB फ्री क्लाउड साइक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, विद पेड टायर्स भी है इसके। आप पेड टायर्स में ना जाए तो अच्छा है, जरूरत नहीं पड़ता है हम लोगों के लिए। तो कोई भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिबटेक्स या फिर RIS वगैरह में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इन बिबटेक्स या RIS जो आप एक्सपोर्ट किए हैं उसको आप सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए, जैसे रायान है, कोविडेंस है, ASR रिव्यू है, ये सब में डायरेक्टली इंपोर्ट करके आपका सिस्टमेटिक रिव्यू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेंडले मेंडले इज ओन्ड बाय एल्सवेयर, एज आई टोल्ड यू। इसका वेब और डेस्कटॉप वर्जन्स अवेलेबल है। इट ऑफर्स 2 GB ऑफ फ्री, 1 second. It offers 2 GB of free cloud storage. Then Mendeley site add-in for Word and Mendeley web importer भी अवेलेबल है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एंड नोट भी है। दूसरा मैं अल्टरनेटिव्स आपको बता रहा हूँ। एंड नोट इज प्योरली लाइसेंस्ड वर्जन होता है, तो और एक ओपन सोर्स अगर आपको चाहिए तो जाब्रेफ है, जो लेटेक्स नेटिव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जाब्रेफ बोल के, JABREF। एंड यू हैव पेपर पाइल, पेड है, एक्सेलेंट गूगल डॉक्स के साथ में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन होता है इसका, पेपर पाइल का, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक रेफरेंस मैनेजर जो है विल इंपोर्ट मेटाडाटा व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसको पता नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपने इंपोर्ट दिया तो इंपोर्ट करेगा, वो सही है या नहीं है उसको पता नहीं है।
पब्लिशर्स से क्या होता है बहुत बार कि मेटा डाटा में जो एरर्स होते हैं, वॉल्यूम नंबर मिसिंग हो गया, ऑथर नेम्स कुछ भी लिख देते हैं, वेरिएशंस होते हैं, स्पेलिंग्स में वेरिएशन होते हैं, आगे पीछे होते हैं, सरनेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में वेरिएशंस होते हैं. Then you have book chapters arrive with no editors. The tools with faithfully reproduce everyone from those errors in your book biographies in front of the reviewers. तो ये रिव्यूअर्स क्या करते हैं कि ऐसे एरर्स को नोट करके आपको रिपोर्ट करते हैं, चेंज करने के लिए बोलते हैं, या फिर उसमें टाइम लैग ज्यादा हो जाता है आपका पब्लिकेशन आने में. तो आपको इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स टू क्लीन अप. आपका अगर 20 रेफरेंसेस है तो आपको 10 मिनट्स लगेगा उसको क्लीन अप करके सही से साइट करने का और रेफरेंस में देने के लिए. सो नेक्स्ट वन इज द रिगर एंड द ट्रांसपेरेंसी, जिसमें हम लोग प्रिज्मा मॉडल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे कि हमने बोला था कि प्रिज्मा स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रिज्मा किस लिए क्या बोला जाए, प्रिज्मा प्रिज्मा हम लोग प्रिज्मा 2020 बोलते हैं. तो इसमें होता क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस. प्रिज्मा स्टैंड्स फॉर preferred reporting items for systematic review and meta analysis. प्रिज्मा का एक्चुअल नाम है प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस. इसका करंट वर्जन जो चल रहा है हमारा, जो वो है प्रिज्मा 2020. ठीक है, ये पहले का जो 2009 का जो वर्जन था उसको सुप्रेसिड करता है. एंड एज ऑफ नाउ इट इज हैविंग 27 आइटम चेकलिस्ट अक्रॉस 7 सेक्शंस. तो 7 सेक्शंस में 27 चेकलिस्ट है, एंड प्लस ए रिवाइज्ड फ्लो डायग्राम जो है उसको दिया गया है यहाँ पे. Importantly, some sub now separate record identified through database and registers from those identified through other methods, website like no website citation searching, contact with authors. ये सब भी possible है. Prisma has expanded expectations around reporting with full search strategy, effective measures, certainty of evidence. तो ये जो एक्सटेंशंस है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रिज्मा पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल्स, प्रिज्मा एस स्टैंड्स फॉर सर्चिंग रिपोर्ट्स, देन यू हैव प्रिज्मा एससीआर स्कूपिंग रिव्यूज, प्रिज्मा एनएमए नेटवर्क मेटा एनालिसिस, प्रिज्मा आईपीडी, प्रिज्मा डीटीए, प्रिज्मा इक्विटी, then you have prisma lcr which is living scientific reviews, देन प्रिज्मा फॉर अब्स्ट्रैक्ट ये भी है. इसमें आपको सिर्फ 12 आइटम्स देखने को मिलेंगे. और प्रिज्मा में और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि partial updates for Prisma 2020 are in development to incorporate guidance on the use of AI tools in the systematic review process. मतलब जो AI tools यूज कर रहे हैं systematic review में उसका भी गाइडलाइंस लाने का कोशिश कर रहा है. प्रिज्मा 2020 का वर्जन को अपडेट करके AI सिस्टमेटिक रिव्यूज, AI टूल्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिव्यूज में उसमें सुधार लाने की कोशिश किया जा रहा है. एंड प्रोबेबली ऑन द पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट पे भी थोड़ा सा अपडेट्स लेके आएंगे प्रिज्मा का नेक्स्ट वर्जन में. Then you have the Prisma SCR and Prisma NMA are also in progress. तो ये भी प्रोग्रेस में चल रहे हैं with maybe updated expected to be published open access in 2026. So तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिज्मा -statement.org यहाँ पे जाके उसका पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं और क्या क्या प्रोग्रेस में है. तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज नोट डाउन दिस prisma-statement.org. यहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं. जो प्रिज्मा जो है ये इट्स रिपोर्टिंग गाइडलाइन, इट इज नॉट ए मेथड. ये कोई मेथड नहीं है. इट इज नॉट ए इक्वल क्वालिटी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है. इट इज जस्ट रिपोर्टिंग मेथड. इसमें आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने काम कैसा किया है सिस्टमेटिक रिव्यू में उसको रिपोर्ट करने का प्रोविजन है. बस इसमें क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है.
ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल तो आप डिसाइड करेंगे ना एज ए ऑथर कि कौन सा आर्टिकल मेरे लिए अच्छा है, सुटेबल है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको रिकॉर्ड्स का फ्लो चार्ट डायग्राम्स है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड्स आपने एक्सक्लूड किया, कितना रिकॉर्ड्स इंक्लूड किया, कितना रिकॉर्ड सुटेबल था, कितना रिकॉर्ड सुटेबल नहीं था, किसी में कुछ प्रॉब्लम था, डुप्लीकेट कितना था, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट मेक ए बैड रिव्यू गुड। तो आपने प्रिज्मा मॉडल में डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका जो खराब रिव्यू है वो अच्छा नहीं बन जाता, ठीक है। या कोई अच्छा रिव्यू खराब नहीं बन जाता जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूज द प्रिज्मा स्ट्रक्चर और फ्लो डायग्राम टू रिपोर्ट, राइट। प्रिज्मा टेल्स यू व्हाट यू मस्ट टेल द रीडर। प्रिज्मा बोलता क्या है कि आप रीडर को क्या बताना चाहते हैं, कैसे काम किए हैं, वो बताने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उस पे आपको रीडर को आप एड्रेस कर सकते हैं। ये कभी भी आपको हाउ टू डू द रिव्यू इसके बारे में सिखाएगा नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है, तो मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ। इस चेकलिस्ट में आप जाके क्वेश्चन करके आप उसको थोड़ा सा ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस है, इसको 6 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप अपना सिस्टमेटिक रिव्यू को कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिस्टमेटिक रिव्यू कहाँ से करना है, सीखना चाहते हैं, तो ये कॉकरेन हैंडबुक है, इसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। जेबीआई मैनुअल फॉर एविडेंस सिंथेसिस है, इसमें भी आप जाके सिस्टमेटिक रिव्यू को कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। हाउ डू आई रिपोर्ट इट, वो सिस्टमेटिक रिव्यू को कैसे रिपोर्ट करना है उसको आप, उसमें आप प्रिज्मा 2020 के गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। देन हाउ डू आई अप्राइज द इंक्लूडेड स्टडीज, जो आपने स्टडीज इंक्लूड किया है उसको कैसे अप्राइज करना है, उसके लिए दूसरे टूल्स है, जैसे रॉब 2 है, रॉबिन्स 1 है, न्यू कैस्टल ओटवाल स्केल है, जेबीएल क्रिटिकल अप्राइजल चेकलिस्ट है, ये भी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाउ डू आई अप्राइज समबडी एल्स रिव्यू, किसी और ने रिव्यू किया है उसको कैसे अप्राइज कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एमस्टर टू रॉबिस, ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू आई एक्सप्रेस सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस, तो एविडेंस सर्टेनिटी के बारे में आपको एक्सप्रेस करना है तो आप ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस है। देन वेयर डू आई रजिस्टर द प्रोटोकॉल्स, तो ये जो प्रोटोकॉल्स है उसको कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, उसके लिए प्रोस्पेरो है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए ओएसएफ रजिस्टर्स है, इन प्लासी है, तो ये सब में आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रिज्मा जो है ये एक इक्वेटर नेटवर्क का फैमिली का है। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत लोग जो है इक्वेटर नेटवर्क के बारे में नहीं जानते होंगे। सो इसमें क्या है, आई विल गिव यू ए लिंक, यू जस्ट गो एंड चेक equator-network.org। यहाँ पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉर योर डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है, गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे रैंडमाइज ट्रायल्स के लिए कैसे करना है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए कैसे करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कैसे रिपोर्टिंग करना है, केस रिपोर्ट्स कैसे होता है, स्टडी रिपोर्ट्स कैसे होता है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी कैसे बनाना है, एनिमल रिसर्च पे कैसे रिपोर्टिंग करना है, इकोनॉमिक एवेल्युएशंस को कैसे करना है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन मॉडल्स, एआई इंटरवेंशंस, ये सब के बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, जहाँ पे equator-network.org, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रिज्मा भी इसका ही पार्ट है, इक्वेटर नेटवर्क का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि प्लीज फाइंड योर गाइडलाइंस बिफोर योर राइट। आप क्या लिखना चाहते हैं उसका बेसिस पे आपका वो गाइडलाइंस क्या बोल रहा है उसको पहले ही पढ़ लीजिए, ना कि बाद में रिव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा, उसके बाद आप पछताने से अच्छा है कि पहले ही सीख के कर लीजिए। देन यू हैव द प्रैक्टिकल प्रिज्मा डिसिप्लिन, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। हाउ मच टाइम वी हैव, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, राइट, ठीक है। देन यू हैव द स्क्रीनिंग टूल्स, जो प्रिज्मा आपने कर लिया है, रिपोर्टिंग कर लिया, उसके बाद स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, जैसे रायान फ्री वेब बेस्ड ब्लाइंड डबल स्क्रीनिंग मोड है, तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, इसको यूज कर सकते हैं। कोविडेंस ये पेड है, कोयर एंड एफिलिएटेड है, ये एसआर रिव्यू है, जिसमें मतलब ये सारे टूल्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास सर्च कर लिया आपने स्कूपर्स या वेब ऑफ साइंस में या गूगल स्कॉलर में, आपने रिकॉर्ड्स ले लिए पूरे,
विथ मेटाडाटा। रिकॉर्ड्स लेने के बाद आप ये टूल्स में जाके उसको इंपोर्ट करके आप वन बाय वन अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं है। तो वो डिसाइड करने के लिए आप ये टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रयान, कोविडेंस एंड एएसआर रिव्यू। ठीक है, ये तीनों टूल्स को इस्तेमाल, तीनों में से कोई एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप 500 आर्टिकल्स है तो मान के चलिए उसमें से 50 आपको अच्छा लगा तो 50 को रख के बाकी का आप नॉट सुटेबल बना सकते हैं। तो वहां पे डिसीजन लेने के लिए ये टूल्स का इस्तेमाल किया। प्रिज्मा 2020 आर पैकेज भी है और एसोसिएटेड विद शाइनी ऐप है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स योर ओपन साइंस फ्रेमवर्क। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क स्पेस है जहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपका जितना भी जैसे फाइल्स है, विकीज है, कंपोनेंट्स है, देन वर्जन हिस्ट्रीज है, रेगुलर परमिशंस, इंटीग्रेशंस। इसका इंटीग्रेशन जो है गेटअप से होता है, गूगल ड्राइव से होता है, ड्रॉप बॉक्स से होता है, डाटावर्स, फिक्स शेयर से होता है, अमेजन S3 से भी होता है। तो इसमें बेसिकली आप अप टू 5 GB तक प्राइवेट डाटा स्टोर कर सकते हैं और 50 GB तक आपका पब्लिक प्रोजेक्ट जो है उसका डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इस टाइम में आपको हाइपोथेसिस, सैंपल साइज, वेरिएबल्स, एनालिसिस प्लान बिफोर यू लुक एट द डाटा। तो ये OSF टाइम स्टैम्प्स इट, फ्रीजेस इट एंड इश्यूज ए DOI। तो ये आप स्टोर करेंगे तो क्या करेगा, OSF जो है वो आपको एक स्टैंपिंग के जैसे काम करता है। पूरा आपका डाटा या जो भी हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव जो भी आपने वेरिएबल्स जो आपने बनाया है उस पे एक DOI इशू कर देता है। तो वो आपका रिकॉर्ड बनता है और आप उसको, लोग उसको साइट भी कर सकते हैं आगे जाके। तो इट गेट्स योर डाटा, इवन योर डाटा गेट्स साइटेड। और प्री प्रिंट्स भी है। प्री प्रिंट्स में भी आप मतलब जैसे आपका आर्टिकल रेडी हो गया है, अभी पीयर रिव्यू में चल रहा है, या फिर आप सबमिशन करने से पहले प्री प्रिंट्स डाटाबेस में सबमिट करेंगे तो वहां पे भी आपको DOI इशू होगा और वो भी साइटेबल बन जाता है। ठीक है, ये सब क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस दिस एक्चुअली प्रिवेंट्स द हार्किंग। हार्किंग का मतलब होता है हाइपोथेसाइजिंग आफ्टर रिजल्ट्स आर नोन। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस पहले नहीं बना रहे हैं, रिजल्ट्स आने के बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम प्रूव कर रहे हैं कि प्रेजेंटिंग ए पोस्ट हॉक फाइंडिंग एज टू बी एज बीन प्रिडिक्टेड। मतलब आपने रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट देखा है, उसके बाद अपना हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए ये प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जो आपका OSF पे करना है या फिर आपका प्रीप्रिंट्स पे करना है या रजिस्ट्रीज पे करना है तो ये सब वहां से कर सकते हैं। देन पी हैकिंग को भी कंस्ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपके मान के चलिए आपका लगभग 12 एनालिसिस आपको करना है, बट आपने क्या कर दिया, 12 एनालिसिस में से जो सिग्निफिकेंट एनालिसिस आपका जो रीच हुआ है, सिग्निफिकेंस लेवल रीच हुआ है, मान के चलिए 3-4 रीच हो गया, बाकी का रीच नहीं हुआ, तो यू आर रिपोर्टिंग ओनली दो 3 और 4 सिग्निफिकेंस दो एनालिसिस विच हैव रीच्ड द सिग्निफिकेंस, रेस्ट यू आर नॉट रिपोर्टिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्रिवेंट्स सेलेक्टिव रिपोर्ट आउटकम रिपोर्टिंग। तो सेलेक्टिव आउटकम रिपोर्टिंग जो होता है कि अगर आपका 5 आउटकम्स है तो उसमें से आपने 2 ही रिपोर्ट किया, बाकी को रिपोर्ट नहीं किया। तो ये सब से अवॉइड करने के लिए आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। और OSF को यूज करने से आपको दूसरा एडवांटेजेस भी है कि ये पूरा DOI देता है और साइटेबल हो जाता है, रिसर्च आउटपुट्स इन देयर ओन राइट। तो रिसर्च पब्लिकेशन को साइट करना अलग बात है, लेकिन रिसर्च डाटा, उसका हाइपोथेसिस, उसका रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू, जो भी आपका प्रोसेस में प्री प्रिंट्स वगैरह, उसको साइटेशंस मिलना भी आपका API और CA स्कोरिंग के लिए, NAC क्राइटेरिया के लिए बहुत एविडेंस बन जाता है। ठीक है, तो यू कैन स्टोर ऑल द, यू कैन यूज दिस प्री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, जेनेडो, फिक्शेर,
Dayat are alternatives for pure data and software deposits. Genedo integrates directly with GitHub and issues DOI for software release. अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो आप Genedo यूज कर सकते हैं, जो आपको GitHub से डायरेक्टली इंटीग्रेट करता है और आपको DOI इशू हो जाता है इससे. Next comes the analysis part. I will take another maybe 10-20 minutes. एनालिसिस पार्ट में आपको, तो हम सब जानते हैं कि एसपीएसएस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये 4 टूल्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे. इसमें से हम लोग मैक्सिमम लोग जनरली एसपीएसएस को जानते हैं और यूज करते हैं. इसके अलावा एक्सेल भी हम लोग यूज करते हैं. तो डू नॉट लर्न ऑल द 3. अगर आप तीनों को लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी लर्न नहीं करेंगे. तो कोई एक को सीखिए और बाकी 2 या 3 जो है वो क्या करता है वो जानिए. तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. सो when you are doing a standard analysis, your deadline is short and you are ready, already know the interface. तो जो एसपीएसएस का इंटरफेस जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एसपीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कि आप एक स्टैंडर्ड एनालाइज करना चाहते हैं तो उसमें इंटरफेस आप जानते नहीं हैं, जो जानते हैं उसी में करना है, तो आप प्लीज एसपीएसएस का इस्तेमाल कीजिए. अगर यू वांट टू रिप्रोड्यूस, यू वांट अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, पब्लिकेशन क्वालिटी, ग्राफिक्स, मेटा एनालिसिस, बिब्लोमेट्रिक्स वगैरह करना है तो आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. एंड इफ यू आर डूइंग ए टेक्स्ट माइनिंग, मशीन लर्निंग, एपीआई वर्क और लार्ज स्केल डाटा पाइपलाइंस, तो यहाँ पे आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पूरा डिसीजन रूल है आपका, फॉलो कर सकते हैं हाँ? कौन सा एनालिसिस करना है और किसमें किसका इस्तेमाल करना है. एसपीएसएस की बात करेंगे तो दिस इज पॉइंट एंड क्लिक, लो बैरियर टू एंट्री, deeply embedded in social science pedagogy in India, excellent for standard reportrates, descriptive statistics, t-test, ANOVA, ANCOVA, correlation, regression, chi-square, फैक्टर एनालिसिस, रिलायबिलिटी में भी आपका क्रॉनबैक अल्फा वगैरह चेक कर सकते हैं. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वगैरह करने के लिए आप एसपीएसएस का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात यह है कि जो इन एवरी एसपीएसएस डायलॉग बॉक्स देयर इज ए पेस्ट बटन. ठीक है, उसको इस्तेमाल करो, यूज इट. इट राइट्स आपका जो रिजल्ट है उसको रिप्रोड्यूस करना. अगर आप मेनू ड्रिवन मॉड्यूल को इस्तेमाल करते जाएंगे और आप वो पेस्ट ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट रिप्रोड्यूस होने का चांसेस कम हो जाते हैं एंड यू वोंट बी एबल टू लर्न इट प्रॉपरली. तो इसीलिए तो आप एसपीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से. वन सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम.
Just I'll take 1 more minute. There is some problem here. Okay, I'm extremely sorry. Am I audible? Hello. Yes, sir, you're audible, sir. Yeah, thank you very much for the information. Yeah. So we were talking about the SPSS, right? So there is a paste button in the SPSS. So it writes the command into the syntax file. It says that .sps file. Okay. Save that file with your data. Without it, your analysis is a sequence of mouse clicks that nobody, including you, in 8 months can reproduce. Okay. So please use this paste button if you want to reproduce the search, the analysis results as it is. Okay. So if you are using just the click of the mouse, then I don't think that you will be able to reproduce the results as it is. But SPSS is again a costly affair software. It is very expensive. Licensed version is available. Many of the first grade colleges do not have the current licenses, right? So there is an alternative, excellent free answers for this. You can use JASP, JASP. It is a free open source R powered and SPSS like interface and usually strong Bayesian capabilities along with the frequentist ones. Output is publication ready. API tables is also available in the JASP. Then you have the Jamovi, free open source R powered and even gentler learning curve it is having, extensible through community modules, and it can show you underlying R syntax also as you click, which makes it very super bridge into the R. अगर आपको R नहीं आता है तो वहां से आप जमो यूज करेंगे तो उसमें आपको सिंटेक्स भी R का सिंटेक्स क्या टाइप हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, तो आप उससे भी आप सीख सकते हैं R सिंटेक्स कैसे बनता है और कैसे यूज कर सकते हैं. Then the last alternative to SPSS is PSPP. ठीक है, इट इज अ फ्री क्लोन ऑफ कोर एसपीएसएस फंक्शनैलिटी. ये आप मान के चलिए इसका एसपीएसएस का डुप्लीकेट है. ठीक है, ये ओपन सोर्स से फ्री है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ योर डिपार्टमेंट इज करेंटली अनेबल टू टीच द क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो कोई टीचर है जो स्टैटिस्टिक्स का है, क्वांटिटेटिव मेथड्स टीच करना चाहता है लेकिन एसपीएसएस का लाइसेंस नहीं है, उसको टीच नहीं कर पा रहा है. The constraint is gone several years back already. So now you have the JAS, Jamovi, and PSPP available for teaching the quantitative methods in your to your students or scholars. Okay, so it should be your HOD's decision. Maybe you can talk to him and you can start the teaching the quantitative methods using these free and open access softwares instead of SPSS. What is R? R, a free open source statistical computing environment
with something in the region of 20,000 plus contributed packages. It is packages on CRAN. So what is R? R is actually a computing environment, a statistical computing environment, and it is having around more than 20,000 contributed packages from CRAN. Okay. Normally used through the R Studio के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, POSIT इंटरफेस के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पैकेजेस आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्टेड आउट है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आर के कॉलम में जो बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि टेडवर्स, जीजी प्लॉट्स वगैरह है। तो ये टेडरी रीडर, ये सब जो है डाटा मैनिपुलेशन एंड बेस्ट ग्राफिकल ग्रामर अवेलेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन यू हैव कॉर्टो एंड मार्क आर मार्कडाउन, जो रीड प्रोड्यूसिबिलिटी, पे आउट, एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड प्रोस लाइव्स डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Then you have metaphor and meta for meta analysis, including forest and funnel plots इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो it is very good tool R actually. Then you have psychic, which is psychometrics and scale analysis के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Lavana is a structural equational modeling है। Then अगर आप bibliometrics के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो there are two tools, which is bibliometrics and biblioshiny. Then comes the last one, the Python, a general purpose programming language है with a new mature scientific stacks है। इसमें pandas, data frames, numpy, scipy, numerical and scientific computing के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो numpy and scipy जो है वो। Then you have the strata models, classical statistics के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Then scikit learn, machine learning के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Then matplotlib एंड सीबॉर्न विजुअलाइजेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल टिपिकली यूज्ड इन जुपिटर नोटबुक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर पाइथन क्लियरली विंस, पाइथन कहाँ पे दूसरे टूल्स, अब तीन टूल्स के हमने इस्तेमाल किया ना एनालिसिस के लिए, जो एसपीएसएस, जैस, जमोवी, आर। तो इन तीनों में पाइथन कहाँ पे आगे निकलता है, वो है आपका टेक्स्ट माइनिंग एंड एनएलपी का। अगर एनालिसिस करना है तो आपको पाइथन से बेटर कुछ नहीं मिलेगा। देन आप अगर वेब स्क्रैपिंग एंड एपीआई वर्क कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको पाइथन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ओपन एलेक्स का एपीआई है, मशीन लर्निंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी ए प्रोडक्शन लाइन rather than the analysis, नॉट जस्ट एनालिसिस के लिए, ए प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली। और बिब्लियोमेट्रिक्स एंड विजुअलाइजेशन कंपेनियंस के लिए, ये अगर लाइब्रेरी से कोई रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से है, साइंटोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए वॉइस व्यूवर इज ए वेरी गुड विजुअलाइजेशन टूल। देन साइट स्पेस है, स्कीमागोग्राफी का है, ये जीपी है, ये सब विजुअलाइजेशन टूल्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू हैव द कनेक्टेड पेपर्स, लाइट मैप्स, रिसर्च रैबिट, ये साइटेशन नेटवर्क बेस्ड लिटरेचर डिस्कवरी का टूल्स है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रिसर्च लिटरेचर को फाइंड आउट करने के लिए, एग्जिस्टिंग लिटरेचर को फाइंड आउट करने के लिए, और उनका लिंक्स एस्टेब्लिश करने के लिए, कौन सा पेपर से रिलेटेड है, कौन सा ऑथर किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन में जा रहा है, कंट्रीज के बीच में क्या कोलैबोरेशन हो रहा है, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टूल्स यूज करके, कनेक्टेड पेपर्स, लाइट मैप्स, रिसर्च रैबिट, ये सब यूज करके आप सर्च कर सकते हैं। Then comes your यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था लेकिन अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटीग्रिटी। प्रोबेबली ये जो वर्कशॉप है, इसका नाम ही इस इंटीग्रिटी पार्ट के ऊपर रखा गया है, राइट। रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जनरेटिव एआई और द न्यू एज रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यू एज मेथोडोलॉजी, रिनोसिस। ओके। सो इंटीग्रिटी में आपको टर्निटिन और रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर यूजिंग द पेन हियर, दे आर मार्किंग आउट एवरीथिंग ऑन माय स्क्रीन रेड कलर में, सो प्लीज अवॉइड दैट।
ओके, सो टर्निटिन, आपको पहला बात ये ध्यान में रखना है कि टर्निटिन डज नॉट प्रोड्यूस ए प्लगरिज्म रिपोर्ट, ठीक है? इट ओनली प्रोड्यूसेस सिमिलैरिटी रिपोर्ट। जो सिमिलर है मतलब जो मैच कर रहा है वही वो दिखाता है, ठीक है? और प्लगरिज्म है या नहीं है वो नहीं बताता। इट नेवर सेज, इट ओनली शोज द सिमिलरिटी। कौन सा मैच कर रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है वही बताता है। द डिस्टिंक्शन इज नॉट पेंडेंटरी, इट इज डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड अक्यूशन। आप किसी को अक्यूज कर रहे हो कि आप प्लगराइज किए हो, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट इट इज नॉट राइट, ठीक है? सिमिलरिटी हो सकता है, सिमिलर कंटेंट मिल सकता है, बट इट डजंट मीन दैट इट इज प्लगराइज्ड। So let us take some examples to dig deep into this. यहाँ पे what is similarity index actually means? Similarity index क्या होता है? It is a percentage of your text that matches something in the Turnitin corpus, billions of web pages, published work, previously submitted student papers. तो ये Turnitin का corpus क्या है? Turnitin corpus मतलब उसका पूरा collection जो उसमें index किया गया है। तो उसमें क्या है? आपका वेब पेजेस है, बिलियंस ऑफ वेब पेजेस है, आपका पब्लिश्ड वर्क्स जितने भी है वो है, जो वो कवर कर रहा है, ठीक है? एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल, मे बी वट एवर इट इज कवरिंग और इंडेक्सिंग इज अवेलेबल, देन प्रीवियसली सबमिटेड जो स्टूडेंट पेपर्स होते हैं वो अवेलेबल है। अब होता क्या है कि आप जैसे ही कंटेंट को अपलोड करते हैं टर्निटिन में, वो पूरा अपना कॉर्पस को सर्च करता है, इंडेक्स को सर्च करता है, और जहां जहां पे मैच हो रहा है उसको रिट्रीव करके आपको डिस्प्ले करता है। तो वो मैच जो है आपका कभी 15% है, कभी 10% है, कभी 3% है, ऐसे होता है। कभी मैच नहीं करता है तो वो नहीं दिखाता है। सो दैट्स व्हाट इट डज, इट डजंट से कि वेदर द कंटेंट इज प्लगराइज्ड और नॉट। अगर यहाँ पे कंटेंट को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जहां पे वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ डोंट सी द नंबर ऑफ द परसेंटेज, नंबर इट इज ऑन द टॉप, वहां पे जो परसेंटेज दिखा रहा है उसको मत देखिए। आप प्लीज उस सोर्स पे जाइए और देखिए कि कहाँ पे वो सिमिलैरिटी मैच कर रहा है। उसको हर एक सोर्स को आप आइडेंटिफाई करो, चेक आउट करो कि वेदर इट इज रियली प्लगराइज्ड और नॉट, ठीक है? सो यहाँ पे जो है ये 15% सिमिलैरिटी स्कोर डज नॉट मीन दैट 15% ऑफ द पेपर इज प्लगराइज्ड। इट मे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ करेक्टली कोटेड cited materials। वहां पे आपने कोटेशन दिया होगा, कोट किया होगा, साइट किया होगा, स्टैंडर्ड डिसिप्लिनरी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया होगा, मेथड्स, योर ओन रेफरेंस लिस्ट आपने क्रिएट किया होगा। वहां पे वो प्लगराइज नहीं होता है। सिमिलरिटी टेक्स्ट मैच कर सकता है, आपका कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन आपने कोटेशन दिया है, साइट किया है, आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस लिस्ट का लिस्ट बनाया है, ठीक है? टर्मिनोलॉजी डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड डिसिप्लिनरी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। जो स्टैंडर्ड टर्म्स है उसको आप एज इट इज यूज करना पड़ेगा, ठीक है? टर्निटिन को टर्निटिन ही बोलेंगे ना, दूसरा नाम से तो नहीं बोलेंगे। तो वो स्टैंडर्ड टर्म है, तो टूल का नाम है, उसको टर्निटिन ही लिखना पड़ेगा। अब वो सिमिलैरिटी मैच करेगा, so it doesn't mean that you are plagiarizing. On the alternative, if the faculty, if you find that there is a 3% match, it doesn't mean that you are not plagiarizing, ठीक है? वो 3% मैच अगर एग्जैक्टली आपने किसी का कॉपी किया है विदाउट एनी साइटेशन, विदाउट एनी कोटेशंस, आपने एज इट इज साइट करके बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना आइडिया की तरह से, देन दैट 3% इज ऑल्सो प्लगराइज्ड, ठीक है? तो प्लीज ये परसेंटेज के ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हर एक सोर्स जो मैच कर रहा है उसको ओपन करके देखिए क्या सिमिलरिटी मिल रहा है और हाउ मच इट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ, वहां पे जो है कि अब मिसकंडक्ट किसे बोलते हैं, कि आप कौन सीरियस कॉन्सिल सीरियस मिसकंडक्ट किसको बोलते हैं? जहां पे यू हैव पैराफ्रेज्ड एंड अनसाइटेड सोर्सेस है, प्लगरिज्म ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर लैंग्वेज, फैब्रिकेटेड डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड इमेजेस को आप अपना पब्लिकेशन में डाल रहे हैं, आपका साइटेशन पैडिंग हो रहा है, देन नन ऑफ दिस प्रोड्यूसेस स्ट्रिंग मैचेस। यहाँ पे क्या होता है कि मैच, आपका रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप प्लगराइज कर रहे हो एक्चुअली। तो द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टर्निटिन रिपोर्ट
इज द लीस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, उसको भूल जाइए। ओपन द सोर्स ब्रेकडाउन, हर एक सोर्स को आप ओपन करो, लुक एट वेयर द मैचेस आर एंड व्हाट दे आर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये सिंगल 400 वर्ड कंटिन्यूअस मैच फ्रॉम वन सोर्स at 8% overall is far more serious than 28% scattered cross 60 resources in method selection। ठीक है, तो 8% जो है कंटिन्यूअस है तो वो ज्यादा सीरियस है, ना कि 28% जो स्कैटर्ड है पूरा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे सुपरवाइजर हमको क्या करना चाहिए, अगर इसको सीरियसली एक सुपरवाइजर या फिर टीचर है उस स्टूडेंट्स को प्लेगराइज करने से रोकना है तो क्या करना चाहिए? आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको आप ओरल एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं कि वो कैसे काम किया है। let her or him explain what he has done। उसका प्रीवियस नोट्स चेक करो कि उसने प्रीवियस ड्राफ्ट वगैरह कैसे बनाया है, उसके बेसिस पे देखो। लिखने वाला सीधा पब्लिकेशन में लिख के लेके नहीं आएगा ना, वो तो अपना वर्क होमवर्क करेगा, नोटबुक में नोट्स पॉइंट्स नोट करेगा, उसका बेसिस पे अपना ड्राफ्ट बनाएगा। तो वो प्रीवियस जितने भी वर्क्स है उसको चेक करो और ओरल एक्सप्लेनेशन मांगो कि स्टूडेंट से कि कितना वो किया है, काम किया है, उसको जानने के लिए कि उसका जो काम किया है वो तो बताएगा ही, जो काम नहीं किया वो बता नहीं पाएगा। सिंपल सा बात है। सो टेस्ट द स्टूडेंट, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और टर्निटिन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको टर्निटिन एक एप्लीकेशन है, उसको सही तरह से सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप वहां पे कोटेड मटेरियल्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, और स्मॉल मैचेस दैट इज कंटिन्यूअस वर्ड्स जो है 14 वर्ड्स का जनरली एक्सेप्टेबल है, तो कंटिन्यूअस 14 वर्ड्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेस देन 14 वर्ड्स है तो एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिमिलरिटी परसेंटेज जो है वो ज्यादातर हाई दिखाने का चांसेस होता है। और एक बात है कि जो आप कभी कभी हम क्या करते हैं, पहले एक बार चेक कर लिए, दूसरे बार चेक करने जाएंगे तो उस टाइम में हम एक वहां पे रेपोजिटरी का रेडियो बटन होता है, वो रेडियो बटन चेक करके रखे हैं, तो क्या हो गया, आपने पहली बार जब सबमिट किया उस टाइम में वो सेव हो गया उसका रेपोजिटरी में। अगली बार जब चेक करने जाएंगे तो देर इज ए चांस दैट 90% या 90 मोर देन 90% मैच सिमिलरिटी मैच में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप स्टूडेंट का पेपर सबमिट कर रहे हैं, अगर आपको रिवीजन सबमिट करना है तो उसको रेपोजिटरी में ना भेजे, वो सेटिंग में है, सेटिंग में उसको अनचेक करके रखना है ताकि वो रेपोजिटरी में ना जाए। और टर्निट ये जो प्लगरिज्म के ऊपर जो रेगुलेशंस है एज पर द यूजीसी, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से इसमें बेसिकली कितना लेवल्स का दिया हुआ है, एक तो लेस देन 10% विच इज एक्सेप्टेबल, देन यू हैव 10 to 40% विच इज नो it's attracting no penalty but escalating penalties across 10 to 40%, then you have 40 to 60% and greater than 60% bands है इसमें, with exclusion of properly quoted materials, references, bibliographies, standards or generic terms. Then the regulations also require institutions to constitute a departmental academic integrity panel, DAIP, and institutional academic integrity panel, IAIP, and to run awareness program। तो ये दोनों का काम एक डिपार्टमेंटल लेवल पे और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक कमिटीज बनाना है, एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनाना है और लोगों को इनका अवेयरनेस क्रिएट करना है। Advise participants to consult the actual gazette text and their own universities implementing audience। हर एक यूनिवर्सिटी का एक implementing audience रहता है, उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शोध शुद्धि इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, शोध शुद्धि, शोध गंगा नहीं, शोध शुद्धि इनिशिएटिव है, जिसमें इन्फोनेट प्रोवाइड्स प्लगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू एलिजिबल इंडियन इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ चार्ज। तो हमको पता है कि हमारा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में सब जगह पे इन्फ्लिपनेट में अपना जो है प्लगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो दे के रखा है। जनरली इट इज डिलिब्रिट राइट नाउ, पहले तो उरकुंड था, उसके बाद डिलिब्रिट आया, उससे पहले टर्निटिन यूज करते थे, टर्निटिन और ऑथेंटिकेट दोनों था, दोनों का चला गया, फिर उरकुंड आया, उरकुंड के बाद में अभी आपको
कौन सा ड्रिल बिट यूज कर रहे हैं, बिकॉज ड्रिल बिट कवर्स मोर कवरेज ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है, and even the fees or the charges are very less for drill bit. Then a very large number of faculties do not know their institution already has this. So Turnitin paid hai, lekin but institution already subscribe किया होगा. And ask your librarian. जाओ आप पूछो अपने librarian से और try to find out what access you have, which plagiarism software they are using and how they will handle. अब टर्निटिन में एक अपडेट आया है रिसेंटली, एआई राइटिंग डिटेक्शन बोल के, ठीक है, एआई राइटिंग डिटेक्शन बोल के आया है, ये अप्रैल 2023 से एक्टिव है। और पहले तो सेपरेट सेपरेट हुआ करता था, अभी इसको कॉन्फ़िगर करके सिमिलैरिटी रिपोर्ट के साथ में ही इजीली इंटीग्रेट कर दिया गया है। दोनों का रिपोर्ट एक साथ में आसपास में ही अलग अलग बटन्स पे है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक टर्निटिन से ही एक डिस्क्लेमर आता है वहां पे, ठीक है। इट सेज दैट नो कि द कंपनी reports a false positive below 1%, ठीक है, and containing more than 20% AI generated content under its testing conditions, ठीक है। इसका फिर भी एक क्लेम है कि इसका जो एक्यूरेसी है 98 पॉइंट प्लस परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ में ये डिटेक्ट करता है, बोलता है अपने डिस्क्लेमर में। लेकिन ये भी क्लेम करता है कि ये 0 to 19% के बीच में अगर एआई कंटेंट आ रहा है तो उसमें चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिविटी जो है 1% का होता है, तो इसीलिए वो डिस्क्लेमर देता है कि आप अपने से चेक करो। लेस देन 20% है तो वो दिखाएगा नहीं कि आपका एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो जनरली वी थिंक दैट दैट इज एक्सेप्टेबल। नाउ व्हाट इज द अप टू 20%, क्या हम लोग एआई जनरेट कर रहे हैं, जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन इट इज अप टू द सुपरवाइजर एंड द स्टूडेंट टू डिसाइड। So we'll not decide on this, but there is an option in Turnitin to check the AI content. Even in Dilbrit also it is available. You can just go through. But none of the tools can perfectly say that the content is AI generated. Okay, they can match. They are all machines. They can match and show what is matching, but it is for the human interpretation to decide whether it is some misconduct has been conducted or not. An AI writing score is a prompt for conversation, never sole evidence for finding a misconduct. It is just an kind of no example, or may you can say that no kind of evidence report that you want, but it cannot show the actual misconduct. If a score concerns you, do not open with acquisition, जो भी है उसके साथ में डायरेक्टली आप कॉन्फ्रेंट मत कीजिए। आप पूछिए कि ड्राफ्ट कहाँ है, आपका ड्राफ्ट दिखाओ, आपका नोट्स दिखाओ, आपका सोर्सेस कहाँ है, पुराना वर्जन्स कहाँ पे है वो पूछो। देन आस्क द स्टूडेंट टू टॉक अबाउट देयर आर्गुमेंट, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में बात करने के लिए बोलिए, उसको एक्सप्लेनेशन मांगिए। तो ऐसे करके आप जान सकते हैं कि जो काम किया है वो बताएगा, जो काम नहीं किया है वो बता नहीं पाएगा। सो दैट वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज डन एंड व्हाट इज नॉट डन। देन कम्स योर चैट जीपीटी एंड अदर जनरेटिव एआई, जिसको जो है रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ नाउ standard bodies on AI generated contents like no COPE, ICMJE, WAME, EASE, STM, and very major publishers whose policy has been reviewed coverage on three principles. There is no live debate here. AI cannot be author. ये सब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स का कवर किया है, जो ये सारे स्टैंडर्ड्स एक ही बात को बोलते हैं, दैट इज एआई कैन नॉट बी ऑथर। व्हाई? Because AI is not a it says that though no major journal, publisher or integrity body permits an AI in the author byline as a co-author
or in a credit contributor role. The reason follows directly from what authorship means. ICMJE क्राइटेरिया में बोला जाता है कि अगर ऑथर बनना है तो ऑथर को अकाउंटेबल होना पड़ेगा फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क दैट ही और शी हैज डन. तो एआई कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट इट इज रिटन. और एआई कहाँ से जनरेट कर रहा है? वो खुद से जनरेट नहीं कर रहा है, कहीं दूसरे जगह से जाके सर्च करके उसको मॉडिफाई करके पैराफ्रेज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है. एआई इज नॉट थिंकिंग, इट इज कलेक्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. एज ऑफ नाउ मे बी थिंकिंग लेवल या जनरेटिंग लेवल उस लेवल पे नहीं है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को या ह्यूमन इंटेलिजेंसी को रिप्लेस कर पाए. दे आर ट्राइंग. People things are getting smarter and smarter, but yeah, as of now it is just collecting from something else, somewhere else, and it is just presenting it in another way or more improved and better language formatting में आपको present कर रहा है. तो first thing is AI cannot be author, it is rejected by everyone. Then you have human authors remains fully responsible. Second one is human जो author है उसका responsibility है कि whatever that the manuscript is containing, including anything on AI produced or they fail to check. ठीक है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एआई अगर कुछ जनरेट करके दिया है तो उसको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको मॉडिफाई करना है, और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को ही लेना पड़ेगा, ह्यूमन ऑथर को. रिलेवेंट एआई यूज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. आईसीएमजेई बोलता है कि जो भी आप सबमिशन कर रहे हैं उसमें कवर लेटर में और मैन्युस्क्रिप्ट में आपने एआई का इस्तेमाल किया है तो उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा. किस काम के लिए यूज किया है? डाटा कलेक्शन करने के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए, या फिर लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, किस काम के लिए आपने एआई का इस्तेमाल किया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. कुछ कुछ पब्लिशर्स का अलग अलग पॉलिसीज है. जैसे एल्सवेयर जो है वो अपडेट किया है अपना पॉलिसी को सितंबर 2025 में. यहाँ पे बोलते हैं कि एआई डिस्क्लोजर इज सेपरेट सेक्शन बिफोर द रेफरेंस एंड प्रोहिबिट्स एआई इमेज जनरेशन. तो अगर आप एआई यूज कर रहे हैं तो रेफरेंस सेक्शन से पहले आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने क्या एआई यूज किया है, क्यों यूज किया है, उसका डिक्लेरेशन देना. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿ Sir, are you there? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ 2 days ಬರುವಂತದ್ದು, ಆ 2 days ಅಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Hello, sir. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂತು. Hello. Hello. Am I audible now? Yes, sir. Now you're audible, sir. Yeah, extremely sorry. We have some power cuts and network issue here in the department. Okay, sir. Sir, I request you to wind up since we are getting Yes, I late, sir. understand. I understand. Already crossed the line. So let Yeah, us thank you, wind sir. up. There is a green thing where you can use the AI for these purposes listed out here. And yeah, so there are three stages. You can use this AIs for the listed out here, like building Boolean strings, candidate keywords, reformatting references, drafting. Then there is cautious use of AI tools for like summarizing other people's literature, checking every claim against the paper, interpreting statistical outputs, confirming with someone who knows the method, assisting qualitative coding, etc. You can use very cautiously. That means that no using it is allowed with disclosure or the declaration. Then what not to do with the AI is this: cleaning data towards a result, asking AI to generate citations, passing off AI ports where prohibited, uploading a manuscript, you are peer reviewing, then uploading unpublished data and participants identifiers, AI generated figures, letting AI write your peer review, etc. It's not allowed. So yeah, with this, let us conclude today's talk. And if you have any doubts, I don't know whether time permits, but if you have any doubts, you can ask me. I'm really thankful to the organizers of this FDP workshop and providing me an opportunity to share my ideas with all the participants. I could not, show you the demos because of the lag paucity of the time. And if possible, if time permits, then we will have a practical demo sessions on this topic or any of the tools that the participants want. I'll be ready. You just organizers, you please, I request you if they are interested, let me know so that we can conduct the practical session. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request the participants, if you have any questions, please, you can feel free to ask. Should I stop sharing the screen, madam? Yes, sir. Yeah, thank you. Yes, anyone is having any doubts, please kindly request the participants to ask. ಬೇರೆ ಬೇಡ Since there are no questions, now I would like to extend my thanks to the organizers. Good evening, one and all. On behalf of Dr. S. Gopalaraju Government First Grade College, Anekal, and GFGC Bangaru Thirupathi, it's my honor to propose vote of thanks for today's second session. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to Principal of Dr. S. Gopalaraju Government First Grade College, Anekal, Professor Ramakrishnappa V. Sir, and Principal of GFGC Bangaru Thirupathi, Professor Manjula V. Ma'am, for organizing 5 days national level faculty development program, which is very relevant in the current times. I also extend my heartfelt thanks to our today's second session's resource person, Dr. Rajesh Rangappa Aldarthi Sir, Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Assam University, Silchar. Sir spoke about various research tools that we need to use as researcher. Sir highlighted on One Nation, One Subscription, Orchid ID, Scopus and Web of Science journals, Prisma, which we can use for the report writing, and 6 different questions and 6 different instruments that we can use to enhance our research, and about project workspace. Sir also highlighted the importance of using one software
among SPSS, R, Python, Genome, etc. So he also, towards the end, he highlighted about the plagiarism and how the UGC regulations regarding the plagiarism. So with this, sir, thank you very much for sharing your knowledge on research survival kit, essential tools every researcher should carry. Your knowledge enhanced our understanding regarding the tools that are existing to carry forward our research, sir. I also extend my deepest appreciation to the organizing team of GFGC Anekal and GFGC Bangaru Thirupathi for conducting this session without any technical glitch. So finally, I thank all the participants for making this session very engaging. Thank you one and all, and please find the feedback form in the chat box. Thank you and see you all tomorrow at 1:25. Thank you. Thank you very much to both the organizing colleges and especially Dr. Netravati for inviting me to this session as a resource person. And it was very interactive. Probably you should have interacted more with me. Anyways, thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you once again.